Catches win matches, but so do direct throws. Saud Shakil wouldn't have subscribed to that notion after losing by 1 run. Wow! He lost his bat in the process. He had to dive. What was a bad day for the bowlers resonated in batting after partnerships changed in quick intervals. Oh, give in! Balochistan would narrate a similar tale. After a high note end at Rawalpindi, they were down to 5 with just 90 odd on board. And then came a sandstorm in Multan that blew their winning streak away. Kingdom Valley National T20 will shine under lights now. And will that brighten their luck tonight? Welcome to the City of Saints, Multan and Multan Cricket Stadium, shining lighthouse bright, with Balochistan and Sindh playing the first game under lights. Match 22 is all set and ready. Now we're looking at the end of the tournament where everything is very important, especially the points. The teams arrived a little earlier with Balochistan after a game that wasn't completed because the sandstorm. Will hope that they get their win today. And their counterparts, Sindh, are also looking to get their 2 points. They've been performing well. It's a decent surface, offering a lot of bounce. Runs are there, no problems for the batters. But yes, shot selection has to be spot on. Bowlers, the paces will get some support on it. Some seaming under the lights, some swing early on. Spinners will have a say. Ali Yunus was there with the captains for the important toss. As we have come a long way into this Kingdom Valley National T20 Cup. This is match number 2 and two very good sides are up against each other. It's Balochistan taking on Sindh. I've got the two captains, Yasir Shah, Saud Shakil, and Professor Javed Malik is the match referee. Saud Shakil, it seems like that he's going to flip it. Tails is the call. Heads, Saud Shakil has won the toss. साउथ क्या करेंगे और क्यों? हम लोग आज भी बॉलिंग करेंगे पहले। क्या वजह लग रही है आपको? डे नाइट मैच है और देखेंगे जो टोटल सेट हो जाएगा उसको चेस करने की कोशिश करेंगे। यूजुअली हम देखते हैं कि आप टॉस जीत के ज़्यादा बॉलिंग करते हैं, तो आप स्ट्रेंथ आपकी बैटिंग है उस पर जाते हैं? हाँ यही वजह है, स्ट्रेंथ मेरी बैटिंग है, लेकिन आज मेरी दोनों चीज़ें स्ट्रेंथ है, लेकिन हमारा बस सिंपल प्लान है कि कम से कम पे रिस्ट्रिक्ट करके उसको चेस करने की कोशिश करेंगे। पॉइंट्स टेबल पे आपने नज़र रखी हुई है क्योंकि बहुत टाइट हो गया आप पॉइंट्स टेबल पे, तो उस पर आपको नज़र रखनी पड़ेगी। ऑब्वियसली पॉइंट्स टेबल पे नज़र है, सबकी पूल काफ़ी ओपन है, सारी टीम्स के पास चांस है क्वालिफाई करने का, आखिर में जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वो क्वालिफाई करेगा। टीम न्यूज़ आपकी? 2 चेंजेस है, मीर हमजा और सोहेल खान वापसी आ गए, दानिश अजीज़ और आसिफ महमूद रेस्ट कर रहे हैं। राइट, ऑल द बेस्ट साउथ शकील। थैंक यू वेरी मच। यासिर शाह, बैटिंग फर्स्ट, कैसा देख रहे हैं इस डिसीजन को? ये ठीक है, इतना डिफरेंस तो नहीं होगा क्योंकि ड्यू का भी इस तरह वो नहीं है कि अब बादल भी आज, तो ड्यू का मुझे नहीं लग रहा कि ड्यू का कुछ प्रॉब्लम होगा। सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि नॉर्दर्न के मैच जीतने के बाद पॉइंट्स टेबल पे काफ़ी हलचल हो गई है, तो क्या आपने नज़र रखी है उधर? ये कि कोशिश कर रहे हैं हर मैच पे कंसिडर, हर मैच पे 100% देते हैं, तो कोशिश करते हैं कि बस हर मैच में परफॉर्मेंस करो, जीते हैं। आखिरी मैच में थोड़ा मसाइल हो गए थे, तो आज क्या चेंज देखने को मिलेगा आपकी टीम से? अनफॉर्चुनेटली वो तो डीएल पे हो गए सारी चीज़ें, और कोशिश करेंगे कि अच्छा के लिए अच्छी क्रिकेट खेलें यहाँ पे। राइट, आपकी टीम न्यूज़? हारिस सोहेल इन है। Right, all the best, Yasir Shah. Thank you. Right, the news from the centre is that Sindh has won the toss and decided to bowl first. All right, let's have a look at the teams, and we know that 2 changes for Sindh. They've got Mir Hamza and Sohail Khan back, so bowling has been strengthened. They've left out Danish Aziz and the other player being Asif Mahmood. Balochistan, it's good news. Strengthening the middle order, Haris Sohail walks back in and they'll be looking to just redeem themselves from an unfortunate loss. So Sindh won the toss and decided to put Balochistan into bat and have the usual openers. Asad Shafiq, along with him Hasibullah, left-hand prodigy, and he is good. He's been performing well. Asad Shafiq's role is to not only bat and guide the youngster.
senior pro, Asad Shafiq, hasn't played big innings, hasn't crossed 50 mark in this tournament, but he is a very technically sound batter, loves to take time on. The surface might support him. The surface which is allowing bounce. The ball coming on too nicely. Hasibullah. In the previous game he really couldn't get going, but he's one to watch. Love the width outside off stump. Always expressive whenever he walks out at the crease. Stylish left-hander. The big guy is back. Sohail Khan has been prolific for Sindh. And a really good outing in Pindi. Multan is the new trough. He's getting his first game here. They must have watched the game, the first one, on this pitch. We saw a bit of bounce here. So Mir Hamza and Sohail Khan come into the side. And we're all set for match 2 of the day. First, completely under lights. Umpire says play. Match 22. Sindh deciding to field first. Is wide given by the umpire, so off the mark. Balochistan with an extra. Some shape for Sohail Khan. Just need to hit the right areas. Early on, the paces did leave a mark. Got bounce, they've got some seam going on and swing under lights, obviously. They will have their opportunities to bag some early on wickets against Balochistan. Sarfraz, a man who's running things behind the scene. He is a big help to Saud Shakil and puts in his experience into play. Also at the same time, he's got the best seat in the house, so he keeps an eye, mostly talking to his bowlers, while Saud Shakil is looking after the field. They're going to keep things tight for Hasibullah. He loves to go hard, anything outside off stump. But slip in place, Shajil. It's his strength, but also weakness. Some occasions he chases the ball going away. Got some decent shape, Sohail Khan. It should be a wide again. It is. I think the batters are being just a little touch careful because they know that Sohail can swing the ball. And if they can just see off the first couple of overs when the swing just goes away, ball starts getting a bit roughed up, then you can fancy your short play. It will come. It's a good batting pitch. No dew whatsoever. At least at the moment. I don't know, Saud Shakil has decided to bat second chase. We've seen sides have been struggling first runs off the bat. They've been struggling to chase things down here. Apart from one game that was on DLS. Bringing it back into the left-hander, Sohail Khan. It's a good setup. Couple of deliveries going away and then just nipping back in. Lucky he got some wood on it. It's a thinking bowler. He's bowled two which go away from the left-hander. Those were the wides, and then he tried to bring one in. And wasn't a bad ball either. So that's what the two batters are being careful about. Asad Shafiq now on strike for the first time. You see that one jags in off the surface. He gets a bit of extra bounce, hits him on the upper thigh. The extra bounce, that's what the batters will need to handle. Snipping back in sharp shape off the surface. Got him by surprise. He's always looking for wickets. He knows how to get those early breakthroughs. Even with the older ball, always hunting for batters.
Again, swinging that one in. There'll be third wide in the over. But he's searching. The starting point is a little middle leg, so he's ending up with a wide. Probably wants to shape it in from the fourth off stump. Experienced bowler Sohail Khan. Yeah, that's exactly what he's pointing out. Just the finish of that arm, the wrist. Shouldn't be falling away from middle to leg stump, but finish a round off so that it can end. The ball can end middle. Yeah, that's better. Starting from outside off and then ending within the stumps. It's a very hush-hush start at the moment. You can just feel that the players are trying to get the feel of lights. Not that they've not played under lights before, it's just the tournament completely shifts into a different mode from Pindi all-day games. And then here 2 days of day games because of the Asia Cup that was going on. It's much cooler after that sandstorm yesterday. Nicely driven, but still won't find the gap. End of the over, 4 for no loss. Mir Hamza, the new bowler from the Wakar Yunus enclosure end, that's our end where the commentary is. He is the other change that has been brought in. So the 2 fast bowlers have been included in the 11 today by Saud Shakil and Sindh. He too can swing the ball. He likes to shape it into the right-hander. So you'd expect that the ball will move away from Hasibullah. Nicely driven. You'll find a fielder there. Abrar will have a say here, I'm sure, on this pitch. Seen how the spinners have bowled, especially Mehran. Can turn the ball both ways. He's very smart, thinking bowler. Gets a bit excited at times, but he's good. Yeah, plenty of spin options for Sindh. Got Zaid Mahmood, Ibrar, the 2 leggies. Sahim can also have a go at with the ball. Asad Shafiq, he's been quiet for a while, not that extravagant because Hasibullah has been doing more of the scoring for Balochistan up the order. I mean, he can bat, he can hit well. He goes hard at it. He'll just get a single. That has been another area where batters have been struggling, going very hard at the ball. These surfaces are more sort of where you can just wait for the ball, time it. Asad Shafiq has always looked stylish whenever he does that. That has been his strength. Nice shot. Oh, misfielding. There'll be runs here. At least a couple. Because he's got a bit of hand to it, so the pace has been taken off. It was Faraz Ali with the misfield. Just that length. He loves that, coming on to the front foot. It was a good-looking shot, good transfer of the weight, but not good fielding. Early on, you want to keep that pressure on. It's a decent surface to bat. The outfield is rapid. Good single there. Just talking about, you notice that batsmen are going hard at the ball. We've seen around the world, good batters let the ball come to them. And they just almost soak the ball in. But when you're out of form, you're automatically going hard at the ball. You're trying to reach it before you should.
and you do it consistently. Then you're not caressing anything, you're not leaning into a drive, you're going hard at the ball. And then the timing is gone. That's a bad ball. And it will be put away all day, all night, 7 days a week. Yeah, left right hand combination for Balochistan. Mir Hamza straying a little bit onto the leg side. Was pretty decent against the left-hander. Asad Shafiq, he'll put away anything on the pads. Just waited for it. And off the hips, no problems. And I do agree, when you're struggling, it has an extra added pressure on you. But when you reach out towards the ball, you play away from your body, you're making things more difficult for yourself. Again, see, he's trying to enforce the agenda here. Asad Shafiq, not saying he's out of form, he's in good form, but it's just, I don't see the ball coming onto the bat, which he's trying his level best. We'll come back to that. 14 for no loss. Sometimes you just get a feeling that he's getting stuck in the surface for a bit, and he sees the shorter length, so he's trying to use more of a horizontal bat to smash it through mid-wicket. Otherwise, the recent knocks that he's played in Pindi may not have been big innings, but he's looked in control, Asad Shafiq. This is the new zone for him. New in the sense that we've always seen him in different formats bat a little down the order, whether he's batting 3-4 or in the red ball cricket he bats 6. But to use the power play, he has impressed. There, that movement away. It's a good ball. It's a brilliant delivery, just inviting for that drive. Sohail Khan pitching it up in that shape. Again, lack of feet movement from Asad. He's trying to slam it into the covers. He's got a smile on his face and deserved that. Yeah, even the other day when he scored 40-odd runs, Asad Shafiq, some glorious drive there, back foot punches, all were well timed. Have a look at that. He did had starts, just a 1 duck against Khyber Pakhtunkhwa and 17 against Sindh. Other than that, he's getting runs, but it's just like he doesn't look that fluent. Don't have a fine leg now for Sohail Khan. He's moving the ball away. Now he's setting him up. You saw in the first over he's bowling, he was bringing it into Asad Shafiq. Now he's bowled 2 which have shaped away. And if he can bowl that line consistently, then his field position, he doesn't need a fine leg. It's an absolute vacant region behind the square on the onside. There's a deep backward square leg, but there's no fine leg whatsoever. You see, he's the umpire. There's nobody behind him to his right. Unmanned. Yeah, that's a release shot. Really, he's gone. He was struggling. Anwar Ali takes the catch. A bit of frustration creeping into Asad Shafiq, and that comes out with a stroke like this at the bottom of the blade. He's been struggling, wasn't comfortable at all. Just a shimmy down the track, but away from the ball. It was always going to travel away. That outswinger hit the bottom of the bat. And to some extent, the misery is done for Asad Shafiq. He got his first man. He has to go scoring 6 runs. Balochistan 1 down on 14. Bangalzai is one to watch.
He has shifted gears in T20 cricket. 58 not out. Decent strike rate, can work on it. He's walking in when the ball is doing the talking. Abdul Wahid Bangalzai. The top is heavy in terms of form. Hasibullah, Bangalzai, Shan Masood, they rely on them. Again a wide. That's the fourth one from Sohail in his 1.3 overs. That's the shot. Just staying leg side. Had to extend his arms to reach the ball. That's a poor shot from him. He knew that Sohail Khan was setting up with an outswingers, and then he created that gap. He'll be disappointed. It wasn't far away from that outside edge. He's frustrating the batters. He's bowling wide outside the off-stump and it's curving away. So when they see the ball coming in a certain line, they try to swing the bat, but it ends up at the toe end. And that's what happened with Asad Shafiq as well. He reached, he was desperate to reach it. Look at that. It's just passing the toe end of Bangalzai. He brings it in. When he brings it in, if he can get a little more accurate and finish within the stumps, it'll be good. It hit the pad, but it's going down the leg. Have a look at Asad Shafiq's wicket, where the ball makes contact. He's reaching for it, toe end of the bat. It's just shaping away from him, so he's nowhere behind it. He did use his feet, but in a straight line. It would have been wise to go towards the offside, step down towards probably mid-off to catch up with the ball with the swing. He tried to negate it, but with a very wrong line. It's a good ball. Held its line. That's the end of the over. It's 16 for 1. Oh, it probably slipped out of his hand, but yeah, still went rapidly. It was a full toss. One thing as a batter you can do when the ball is swinging is just to step out of the crease. I wasn't looking to pitch it in that area, but that swing will obviously boost Mir Hamza. As a batter, just step out of the crease to negate that length, that swing. It would be more comfortable rather than being trapped. It's that swing that's making the ball hit the inner half of the bat every time. And that is why the ball is ending somewhere around mid-wicket when they're trying to drive. Bat path wasn't that good coming outside of stump. When you're facing a left armer, you would like to keep your bat close to your pads and meet it in front of your pads rather than keeping it
very close to the body. That's a wide. It's just almost become like a test match commentary. No fireworks, no big hits at the moment. We're talking about the swing and the stance and everything. Usually you don't get that much time because the ball is being hit left, right and center. This is an extra cautious start. I mean, unbelievably very cautious after losing the wicket of Asad Shafiq. Otherwise, we haven't seen Balochistan going that slow. That's nicely driven. Anwar couldn't cut it off. This is a race with the ball at the moment. And now the ball rolls over along with the fielder. That's the first boundary. And we were waiting for it. Hasibullah is very strong in that zone. Anything outside off stump, whether it's a back foot punch or on driving onto the front foot. Have a look at that. Just a mere push, nothing else. And it was timed so beautifully, it beat the fielders. It was a good effort. Couldn't really get hand on it. The runs are there. It's not the problem, but just the execution. I love how he transfers his weight onto the front foot. First short one. One for the over straight away from the square leg umpire. Maybe it's also the reason that the ball is swinging and they know both Mir Hamza and Sohail Khan can swing it well both ways. They're just being or waiting for that moment when it just stops doing that for them. That was quite high. As a top order batter, the top three of your batting lineup should know how to negate the swing or an extra pace. That's what their job is. They know they're facing a new ball under lights, it's going to swing. Sohail and Mir Hamza, even with not those swinging conditions, they can get some movement. Again, it's all about how a batter would come up with a plan to confront the bowlers. Do something different. Step out of the crease, go deep if you want to prefer back foot. Shorter ball, and that's put away straight away. That's easy. That's easy pickings because the length allows him to stretch his arms. Another great shot. He'll punish you all day long outside off stump. High back lift. That's where he loves it. No worries there. The fielders had no time to react. It's beautifully played for another boundary. 4 overs done. Balochistan 26 for 1. बलूचिस्तान की इनिंग्स में अब स्पिन का दौर शुरू हो रहा है। अबरार अहमद बॉलिंग करने के लिए लाए गए हैं विलियन से। ये अच्छा टूर्नामेंट उनके लिए रहा। रावलपिंडी के मरहले में अच्छी नपीतुली बॉलिंग की। ये अच्छा शॉट खेला जोरदार तरीके से और उतनी आला फील्डिंग। यहाँ उमर बिन यूसुफ नजर आए, उनने यकीनी तौर पर ये चौका बचा लिया। कमाल की एंटिसिपेशन। जहां हम काउ कॉर्नर की तरफ गए थे और उतनी ही शानदार फील्डिंग उमर बिन यूसुफ की जानिब से ऐसी ही इंटेंसिटी दिखानी होगी सिंध के फील्डर्स को, क्योंकि टेबल में अब बहुत हलचल मच चुकी है। लेग साइड में खेला बंगल जई ने। हसीबुल्ला और बंगल जई हमेशा बहुत अच्छा लगता है इन दोनों को एक साथ बैटिंग करते हुए देखना। बंगल जई जो है बहुत जोरदार शॉट खेलते हैं। हसीबुल्ला
ज़्यादातर शॉट्स बैकफुट से खेलते हैं और मंगल सही जो हैं वो स्पिन बॉलिंग के भी बड़े बड़े काबिल बैट्समैन हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। यहाँ पे ये अच्छा मुकाबला है, इन दोनों के लिए बहुत बड़ी लर्निंग है इसके अंदर। इब्रार अहमद जैसे बॉलर को फेस कर रहे हैं, दोनों यंगस्टर हैं और बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आए। स्पेशली अगर हम हसीबुल्लाह की बात करें तो रन्स उन्होंने बहुत किए हैं बलूचिस्तान के लिए इस सीजन में। यहाँ पे बॉल थोड़ा स्किट भी होगा, थोड़ा बाउंस भी हमने देखा पहले मैच में मिलता है बॉलर को मिलता हुआ। बंगल सही जिस तरीके से खेलते हैं ऐसा लगता है कि शायद उनको यहाँ पे बैटिंग करना अच्छा लगेगा, थ्रू द लाइन खेलते हैं। यहाँ 2 दिन पहले सिंध ने जब यहाँ उनको 2 रन से शिकस्त हो गई थी नॉर्दर्न के हाथों, तो उनके स्पिनर्स ने इतनी अच्छी बॉलिंग की नहीं थी, लेकिन अभी तक अच्छी इब्तिदा यहाँ पर की है। स्टंप्स को अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं अपनी रफ्तार को भी। अबरार अहमद, सरफराज अहमद उन्हें पावर करा रहे हैं कि उन्हें ये ओवर जो है बेहतर तौर पर ख़त्म करना ज़रूरी है। हाथ खोलने का बिल्कुल मौका दिया नहीं हसीबुल्लाह को इस आखिरी गेंद पर। 6 रन दिए अपने पहले ओवर में मिस्ट्री स्पिनर ने 5 ओवर्स के बाद 32 पर 1। एक ओवर बाकी रह गया है बलूचिस्तान की इनिंग्स में पावर प्ले का, और स्कोर को 40 के पेटे में यहाँ से लाने की कोशिश होगी हसीब और अब्दुल वाहिद बंगल सही की। अनवर अली दोनों एंड पर बॉलिंग सऊद शकील ने तब्दील कर दी है। अनवर अली यह है, 1-2 बार ऐसा भी देखा गया जब इनने 2 ओवर्स किए पिछले मैच में जब नहीं खेल रहे थे मीर हमजा और सुहेल खान, 2 ओवर इन्होंने पावर प्ले में किए थे, लेकिन उस वक्त इतना फायदा हुआ नहीं था। 1 ओवर तो ये करते हुए नजर आए हैं पिंडी की पिच पे भी। और किनारा लगा और गेंद महफूज हाथों में गई सरफराज अहमद के, तो बिल्कुल भी देर नहीं की, बड़ी जल्दी वार किया अनवर अली ने। बलूचिस्तान के इनफॉर्म ओपनिंग बल्लेबाज आउट हुए और आज ये शॉट ऑन द ऑफ खेलना आसान नहीं है इस पिच पर। जहां ये शॉट इनकी स्ट्रेंथ है वहां ये कहीं ना कहीं इनकी कमजोरी भी है, और जब आप एक सीजन्ड बॉलिंग अटैक के सामने खेल रहे हैं तो आपको अपने शॉट्स चेक करने होते हैं, क्योंकि सारी पिचेस एक तरह की नहीं होती हैं। और यहाँ पे उसी जैसे आपने कहा कि ये वो पिच नहीं है कि जहाँ पे इतनी आसानी से ऑन द ऑफ नए बॉल से लग जाएगा। 15 रन बना सके हसीबुल्लाह, 32 पर 2 बलूचिस्तान। सीनियर बैट्समैन शान मसूद बलूचिस्तान के, इनसे ज़रूरत है। ये नंबर 4 पर इन्होंने खुद को मनवाए हुए हैं, खेलने के पहुंचे। ये जो विकेट है ये इनके स्टाइल ऑफ प्ले को ये ज़्यादा सूट करेगी। इसमें बाउंस है, पेस है और ये इंतज़ार करके खेलना जानते हैं। वैसे भी यहाँ मुल्तान सुल्तान्स की इन्होंने नुमाइंदगी की हुई है, क़यादत भी की हुई है मुल्तान सुल्तान्स की शान ने। हाँ, पसंद होगा उनको इस पिच के ऊपर बैटिंग करना, क्योंकि लेट खेलते हैं, स्क्वायर द विकेट अच्छा खेलते हैं। वेल वैसे तो ये हर जगह अच्छा खेलते हैं, लेकिन जिनकी स्पेशलिटी है वो स्क्वायर ऑफ द विकेट है। तो इसलिए यहाँ पे बलूचिस्तान होप करेगा कि यहाँ से एक बड़ी इनिंग बलूचिस्तान के लिए भी और उनके अपने करियर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग है ये। एक स्लिप भी खड़ी इस वक्त की है कप्तान ने, लेकिन इनके खेल का एक जो दिलचस्प पहलू है कि अभी जिस तरह हसीबुल्लाह जो है ये देखिए थ्रू द लाइन खेलते हुए आउट हुए, गेंद सीम पर पड़ने के बाद
जो है लेंथ से खासी तेज निकल गई। ईशान मसूद जो हैं इनको भी पसंद है ये ऑन द अप शॉट्स ऑफ साइड में। क्या ये इस चैलेंज को मानकर चलेंगे या इससे हटकर खेलना पसंद करेंगे? इनके पास अब वो जो प्लान बी प्लान सी वो आ गया हुआ है, इनके खेल का हिस्सा बन गया है। ज्यादा अच्छे ऑलराउंड बैट्समैन है, ज्यादा अपने करीब आने दिया। सऊद गेंद को नहीं उठा सके, वरना मुश्किल होती। बहुत ही शानदार फॉर्म में नजर आए हमें ईशान मसूद, और क्या ही राइट टाइमिंग है इनके लिए रन्स करने के लिए। आप ओपन करवा दीजिए, रन्स करेंगे। नंबर 4 पे रन्स कर रहे हैं, फिटनेस बेहतरीन है, बहुत ही क्वालिटी क्रिकेटर है, बहुत ही हैंडी क्रिकेटर है आपकी टीम में अगर हो ये। अगर हम दूसरी तरफ सिंध की बात करें तो आज हमें बैलेंस बहुत बेहतरीन लगा है। आखिरी मैच जब खेले थे तो सिर्फ एक रेगुलर फास्ट बॉलर अनवर अली के साथ गए थे, लेकिन आज उन्होंने कंप्लीट बॉलिंग खिलाई है। एक बैटर को कम जरूर किया है दानिश अजीज की सूरत में, लेकिन बॉलिंग कंप्लीट खिलाई है, ये बड़ी मददगार होगी। ये लगी है बैट पर, क्या सामने टकराई थी। राशिद रियाज वो यही समझे कि गेंद जो है जा रही थी लेग स्टंप को छोड़ती हुई। थोड़ी सी हैरानी जरूर हुई। ये देखिए अनवर अली जो हैं इनकी ज्यादातर गेंदें जो हैं वो जाती हैं लेफ्ट हैंडर को छोड़ती हुई। लेग स्टंप राइट हैंडर को छोड़ती हुई। या मैं तो यही कहूंगा कि बहुत बहुत लकी रहे यहाँ पे बंगल जई कि उनको नॉट आउट करा दिया गया है, क्योंकि बॉल शायद थोड़ा लेग स्टंप की तरफ जा रहा हो, स्किट जरूर हुआ, लेकिन बहुत करीबी डिसीजन था ये। अंपायर को एक बार जब स्टंप नजर आना शुरू हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाता है उसके लिए आउट दिया जाना। शानदार डिलीवरी, खासी तेज सी। बंगल जई हुक करने के लिए गए लेकिन लेट हो गए। ऐसे मनाजिर बार बार आज देखने में आए हैं इस पिच पर, और खासतौर पर जब से ये फ्लड लाइट्स रोशन हुई हैं उसके बाद गेंद और ज्यादा तेज निकलने लगी। यहाँ स्किट हो रहा है बॉल इस पिच पे, और आज एक डिफरेंट इंटेंसिटी नजर आ रही है हमें सिंध की साइड से, क्योंकि आखिरी मैच जिस तरीके से हारे थे वो उनको मैच हारना नहीं चाहिए था, 1 रन से हारे थे, तो छोटी छोटी गलतियों को कवर करना होगा। और आज ऐसा लग रहा है शायद सिंध एक डिफरेंट सिंध हमें नजर आएगी। बंगल जई फ्रंट फुट पर आना चाहते थे और ये अच्छा नहीं लगा अनवर अली को बिल्कुल भी। ये किसी भी फास्ट बॉलर को अच्छा नहीं लगता। तो बैट्समैन अगला पांव आगे लेकर जाए। 6 ओवर्स के बाद 33 पर 2। अभी खेलने दे बेटा। एक बार नजर डालते हैं कि जो आखिरी एलबीडब्ल्यू की अपील हुई थी, हम इस डिलीवरी के बाद उस पर नजर डालेंगे। काफी करीबी मामला था, ये स्किट हुआ बॉल। बंगल सही बहुत ही लकी रहे, यहाँ पे इब्रार अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। ये सबसे कम स्कोर है बलूचिस्तान का इस पावर प्ले में, सिर्फ 33 रन बनाए हैं, 2 विकेट्स गवा दी हैं। और उसकी मेन वजह यह है कि अब्दुल वाहिद बंगल जई खेल रहे हैं लेकिन हसीबुल्ला आउट हो गए हैं, क्योंकि वो ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने ज्यादा रन्स बनाए हैं पावर प्ले में। यहाँ कुछ देर पहले ये एलबीडब्ल्यू की अपील की थी अनवर अली ने। देखिए ऑफ स्टंप जो है वो एक लम्हे के लिए नजर आई अंपायर को, और गेंद लेग स्टंप की तरफ निकल जाती, क्योंकि अनवर अली जो हैं ये अक्सर यही देखा गया, गेंद को ये इन स्विंग ही करते हैं ज्यादातर। उनकी स्ट्रोक डिलीवरी है, और क्योंकि पिच में भी मूवमेंट है किसी हद तक, और अंपायर्स को ये बात भी जहन में रखना पड़ती है एलबीडब्ल्यू का फैसला देने से पहले कि कितना बाउंस है, कितनी मूवमेंट है एक पिच में। जहाँ बेनिफिट ऑफ द डाउट आप कह सकते हैं कि राशिद रियाज ने बैटर को दिया, काफ़ी करीबी मामला था, लेकिन हम कहेंगे इन द एंड कि शायद अच्छा डिसीजन है। अच्छे अंपायरों में शुमार होता है राशिद रियाज का।
यहाँ इस साल PSL 7 में ये टूर्नामेंट के बेहतरीन अंपायर करार पाए थे। ऐसा दूसरी बार हुआ। सही है, वाह बोल। और बहुत ही इंटरेस्टिंग, अगर हम टेबल की बात करें तारिक भाई, तो बहुत इंटरेस्टिंग टेबल बन गए। जब नॉर्दर्न ने अपना आखिरी मैच जीता है तो उसके बाद अब सिंध के लिए मसाइल बढ़ गए हैं। इनको भी अब उतनी ही इंटेंसिटी दिखानी होगी, मैचेस जीतने होंगे अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। अभी इसके बाद हम नजर डालेंगे पॉइंट्स टेबल पे तो कितना इंटरेस्टिंग हो गया है। इनसाइड एज बैट पर जरूर लगी, लेकिन उससे पहले बल्ले पे भी लगी थी। शान मसूद की मौजूदगी का एक असर ये होगा कि स्ट्राइक रोटेट होता रहेगा, क्योंकि तेज दौड़ना विकेटों के दरमियान पसंद करते हैं, जो आपकी इनकी फिटनेस का तस्करा कर रहे थे। और दिलचस्पी बढ़ी है जब से ये मसनूई रोशनियां ऑन हुई हैं। ये देखिए गेंद नीचे रही, स्किड करती हुई भी आई। ये भी वजह है बलूचिस्तान के कम तरीन स्कोर की पावर प्ले में। बहुत लकी रहे हैं क्योंकि हमने बहुत बार देखा है जो बॉल इस तरीके से लो रह जाता है बैटर्स के लिए बहुत मुश्किलात पैदा करता है। और बड़ी विकेट होनी थी अगर शान मसूद इस तरीके से आउट हो जाते। अच्छा पुल शॉट, एक रन मंगल जई ने हासिल किया। स्ट्राइक उन्होंने अपने हाथ ही रखा है अगले ओवर के लिए भी। 39 पर 2। असद शफीक और हसीबुल्लाह ने इनिंग का आगाज किया था, काफी टाइट बॉलिंग की है, काफी दूर दूर बॉलिंग करते रहे, इसकी वजह से ज्यादा रन्स नहीं मिले और विकेट हासिल की असद शफीक की। हसीबुल्लाह जो कि पिक ऑफ द बैटर्स हैं इस टूर्नामेंट में, बलूचिस्तान के लिए भी 2-3 चौके जरूर मारे ऑफ द बैकफुट, लेकिन अनवर अली बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर हैं, तो मालूम है इन पिचेस के ऊपर कैसे बॉलिंग करनी है और विकेट हासिल की हसीबुल्लाह की। तो हम कहेंगे कि ये जो पावर प्ले है ये सिंध के नाम रहा है। जी हाँ, इसमें कोई शुबा नहीं कि उनके जो 3 ऐसे पेसर्स हैं जो बहुत बरसों से खेलते हुए आ रहे हैं और वो हर तरह कंडीशंस और हालात से फ़ायदा उठाना जानते हैं। इसी वजह से आज आसिफ महमूद को टीम से बाहर होना पड़ा, जो पिछले 2 मैचेस में खेले थे। आसिफ महमूद हालांकि स्क्वाड में सबसे तेज़ बॉलर हैं, लेकिन आज शायद उन्हें रफ्तार की ज़रूरत थी नहीं, तजुर्बे की ज़्यादा ज़रूरत थी। और शॉट लाजवाब, दौड़े दौड़े आए ऑफ साइड स्वीपर, लेकिन साइम अयूब खासा पीछे रह गए। बंगल जई ने पहली बार यहां पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। जी हाँ, थ्रू द लाइन आप सिर्फ अपने बाजू बॉल तक लेके गए और बहुत तेज घुमाए और प्लेसमेंट बहुत शानदार रही। इस टूर्नामेंट का ये 600वां चौका जो बंगल जई के बल्ले से आया। डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल होगी क्योंकि बहुत टाइट ओवर किया था पिछला। एक और अच्छा स्ट्रोक खेला, एक और रन के लिए बंगल जई रावलपिंडी में ये तासुर दे रहे थे जैसे हर गेंद को हिट करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल पिच की हालत के मुताबिक और टीम की हालत के मुताबिक खेलते हुए नजर आए। किंगडम वैली एक रॉयल लाइफस्टाइल है आपके लिए, आप जा सकते हैं इनके फेसबुक पेज पे और जीत सकते हैं बहुत ही एक्साइटिंग इनामात, तो आप अगले विनर हो सकते हैं। ये T20 का एक खासा है कि फैमिलीज आती हैं ये फॉर्मेट देखने के लिए, फैमिलीज का भी फॉर्मेट है। बड़ा दिलकश स्ट्रोक इस बार शान मसूद। तो दोनों बैट्समैन अब खुल खेलना शुरू हो गए हैं, रफ्तार का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, सिर्फ बल्ला गेंद तक लेकर गए शान मसूद और उन्होंने गैप ढूंढ निकाला। जहाँ स्क्वायर ऑफ द विकेट तो बहुत ही शानदार बैटिंग करते हैं शान मसूद और लेट खेलते हैं और ये इसकी परफेक्ट एग्जांपल है। बैकफुट का बॉल था, लेट खेले और प्लेसमेंट शानदार रही, बाकी काम पेस ने कर दिया और 4 रन हासिल किए।
लेग स्टंप के बाहर गिरी थी, लेग बाई का दूसरा रन भी हो जाएगा। वो दोनों ही फील्डर्स सब पीछे थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आईसीसी वर्ल्ड T20 के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में अगले महीने होने को है, उसके लिए ऐलान होने वाला है। शायद गेंद बैट से भी टकरा गई थी। शान मसूद यहाँ ही 2 रन की गिनती हुई, डबल फिगर में पहुंच गए। 50 रन भी बलोचिस्तान ने अपने पूरे किए। तो ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप हो रहा है, शान मसूद बड़े मजबूत उम्मीदवार अब बन सकते हैं। टीम में वापसी के उनने जिस तरह खेल पेश किया है, टॉप ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर में, वो खेलते ही जा रहे हैं, रन्स बनाते जा रहे हैं और ये अच्छा इजाफा होंगे। पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत भी है बैटिंग में इस्तेहकाम की। इनका तजुर्बा है, पहले ऑस्ट्रेलिया में ये टेस्ट सीरीज़ खेल चुके हैं और जनूबी अफ्रीका में भी इन्होंने टेस्ट मैचों में बहुत रन्स बनाए थे। इंग्लैंड में हाल ही में कामयाब काउंटी सीजन डर्बी के साथ गुजारा और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ इनकी कमिटमेंट का ये आलम है कि ये काउंटी सीजन जो है वो छोड़कर आए ये पाकिस्तान ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट नेशनल T20 खेलने के लिए। लाजवाब, इसे उठा मारा और गेंद स्टैंड में पहुंच गई। बड़ी खूबसूरत आवाज आई कानों में जूं ही गेंद बैट से टकराई बंगलजई के। जहाँ यहाँ पे सीखते हुए शान मसूद से शॉट था, स्किड भी किया और उसको ही पेस की मदद से बाउंड्री लाइन के पार 6 रन के लिए। Saad Mahmood, 58 matches, 74 wickets, economy of 7.43, average of 21, very prolific at this level, and Sindh desperately want him to have a good spell. This wicket is different to what we had in the first 2 days. Last ball, last over, Bangalzai got underneath it. He's full of intent ever since he came onto the pitch. This has been his style, but look, it went right into the stands. Anwar Ali doesn't have that kind of pace to be bowling that length. This will be a key spell, Zaid Mahmood, into his first over, because his 4 overs along with Dabrar are very important. Your leg spinner, your wicket taking option, and you would expect him to not only slow things down in terms of runs but also break this partnership. Just like Mehran Mumtaz in the first game, his 4 overs were key in defending a low total. Here, just to keep the batters in check. You need a good spell. There you go. And they've missed it. So there's certain things about, like you just heard, if Sarfaraz, keep the batter on strike. Don't let him go for those easy singles, because then you just take that pressure off him that he's played 2 or 3 dot balls. Left hand, right hand combination as well. If you allow the strike to be rotated like Zahid did on that occasion, change of field, change of plan, different batter. Good bounce on that occasion. You mentioned Mehran earlier. He was letting the ball go. He was just flighting it, plenty of revs on it, so he's getting the drift. Zahid is bowling quite flat so far. Yes. That was the wrong one. It's quite evident in this season he's worked on that wrong one. He's bowling it more than he ever used to. Something that he's feeling more and more comfortable with, trying it in a match situation. He's good at that shot. Some pace has been taken off by backward point.
Calculated gamble on that, Sean. That was the leg spinner. Slightly cramped for space. He's anticipating the line to be a little wider to allow him that free swing. Sean has added that to his repertoire of strokes. Only one ball Zayed. Had he not reverse sweeped and played a cut shot, that would have gone away, spinning away from the fielder in the deep. Could have earned a boundary. End of the over. 5 of it, 62 for 2. Some crowd has turned up today. The best of this tournament so far. The very first game under lights. It's really caught the attention of people here in Multan. And we expect more and more people to come as the tournament draws to its close. The kind of close games we're seeing. Definitely it's worth a visit to come down here and watch this terrific entertainment. More spin. Saim Ayub will start. The part-time option, but he's been bowling well. His batting has been superb. Lots of reliance on getting a good start for Sindh. And he's a blessing in disguise. In the absence of or the lack of form that Shergill has had. He hasn't had one. Just had 149-run innings. Otherwise, he's been a touch quiet throughout the national T20 till now. You never know when he explodes. Straight away a single. Proven to be a sleeping what's going giant. on? That's very sloppy from Sindh fielders. What was that all about? Game awareness. Keep your eyes on the ball. Look how they sneak through with the second one, showing that they're at ease. They're finishing off with one. Suddenly the eyes go away. There. And they've quickly run the second. That is sloppy indeed. We've seen these games, the margins are very, very small. We saw 6 runs defeat earlier in the day. We've seen a 1-run defeat. These little mistakes need to be ironed out. You want to have any chance of success in this very, very competitive tournament. Talking about Saim, he's started to bowl more and more at this level, feeling more confident. He's all the tricks. He bowls the carom ball, he bowls the leg spinner with his fingers, leg cutter style, and then the off break. Keep an eye on his development. Sikandar said his batting has been outstanding. He doesn't want that. Sarfraz has been saying ball within the stumps, not on the legs. You do that, you get paid with the boundary against your name as a bowler. That's a freebie. Angling down. Sean just had to get some bat on it. 45. Fielder was in the ring charging in. And once he beat that fielder, that outfield is still quick. I'm disappointed. Sarfraz has clearly got a game plan. It's very good to see Sarfraz very involved. And from behind the stumps, he's been telling this to Saim. Don't leave your 3 stumps. And when he did that, he paid the price. You heard it loud and clear. That's where he wants Saim to bowl and challenge Shan Masood.
to play a stroke from that line. Sean Masood missed out on runs yesterday. It was a shortened version of the game, DLS through. He's looking to now shape his innings and play spend a longer time out there. Lots of cricket being played, domestic, international, Asia Cups. This is what's up next, right after the final of the National T20. The next day, 20th September, England starts with their first T20 in Karachi. And that goes on to the 2nd of October with the last 3 games out of the 7 T20s in Lahore. There's a lot for the preparation for the T20 World Cup coming up in Australia in October. Pakistan will get a good outing here and feel against a good T20 side. That's England. It's a historic tour. England coming for this series and then for the Test series later in the winter. Yeah. Well done, Zahid. This is a bumper season for Pakistan cricket at home after a long time. 7 T20s, then 3 tests. New Zealand is also coming. And the usual razzmatazz of the PSL. Yes, only one. Yeah, ठीक है. Will be played at its usual window. With COVID gone, the attendances will be great and a lot to look forward to. Multan will be one of the venues for that tournament. Pushing hard to get the second, they should. Oh, that's 4. Too much width given by Zahid Mahmood. He's been bowling flat. This time he erred in line as well. Bangalzai has been very quick. Look at how he went back. He used relatively straight bat as well. And that allowed him to hit it away from the sweeper. Mir Hamza's despairing dive. Zahid has been bowling quicker. There's something in there for the spinners. We saw that earlier. But Zahid hasn't thrown the ball up in the air. Didn't give it a chance to spin just yet. Relying more on his googlies. His partnership now 44 of 32. That was a run. Why didn't he run? It actually should be his call, but he just refused to take it. Lost in concentration. Brain freeze for a moment, I guess. Yeah. 11 gone, 78 for 2. ये करना है क्या? सही है. शाबाश. इधर है. 7 लोगों ने धन नशा.
Crucial knock for Shan Masood. A lot of eyeballs on him this tournament. He's made some waves. आराम से Wow. These two have been having some trouble with their running since the last over. And Shan Masood walks back. Absolute comedy of errors here. Shan struck it nicely behind square. He's looking very upset. Ball watching. But Saad Khan, the substitute, was alert to the situation, and Sarfraz has done the rest. Shan doesn't normally express at his dismissals, but this time he looked pretty angry. Gone for 25, 78 for 3. Crucial breakthrough for Sindh. That partnership was looking threatening. And Shan Masood looking good for plenty more. Has lost his wicket. Haris Sohail is the new man in. Being absent for a couple of games. Making a return, 35 years of age. Highly talented and skillful. Average of 28 at strike rate. 111. Best of 69. These stats doesn't really do justice to the talent and class of this man. His team requires him today. आराम से आना आराम से टेंशन ही नहीं आ रही भाई पकड़ हाँ जाली फवाद खान You invite your partner and then you send him back. It's impossible for him to turn around and get back into the crease. Wahid has done that on 2 occasions. Earlier, it was the the fine leg, where Sharjeel had a fumble. He didn't run. And Shan Masood was quite upset. And this time around, because the ball is slightly behind the square, he's depending on his partner, and if he shows intent that he's coming, then there's no looking back. oh my word Good ball, just moves away slightly. That's excellent from Abrar. Excellent flighted delivery. Kept going away with the arm from the left-hander. Excellent over so far. only one Got to be extra careful with running between the wickets when Haris Sohail is in the middle. But like Sikandar called it correctly, Abdul Wahid Bangalzai sold his partner under the bus. आखिरी अच्छा That कर आखिरी was अच्छा कर uncalled for. Partnership was building nicely. It has. Another phase of rebuilding required after that loss of wicket in this over. After 12, Balochistan 79 for 3. सिंध के बॉलर्स ने आज
बड़ी नपीतुली बॉलिंग करते हुए बहुत आगे निकलने का मौका नहीं दिया है। इस वक्त बलूचिस्तान, हम कह सकते हैं कि इस मैच में ये 50-50 वाली सूरत हाल है। जिस तरह की पिच है, 80 पर 3 खिलाड़ी आउट हैं और अभी भी उस हालत में है जब ये 15वें ओवर में अपने 100 रन मुकम्मल कर लें। ये गुगली और आखिरी फिर 5 ओवर्स में इनके पास मौका होगा कि स्कोर को 150 तक ले जाएं, जो कि फाइटिंग स्कोर हो सकता है। मंगलजई में ऐसी सलाहियत है, ये अपनी टीम को इससे भी आगे ले जा सकते हैं। उमर यार, यहाँ चांस हो सकता था और यही डिसअपॉइंटमेंट शायद सरफराज अहमद भी शो कर रहे हैं उमर को, क्योंकि उमर का शुमार अच्छे फील्डर्स में होता है और सर्कल में जब आप फील्ड कर रहे हो तो आपको बहुत ही चाको चौबंद रहना पड़ता है। यहाँ पे चांस क्रिएट हो सकता था और हमने पहले भी देखा है काफी कंफ्यूजन रही है अब्दुल वाहिद बंगलजई के साथ। एक कंफ्यूजन पहले शान मसूद रन आउट हुए, यहाँ पे भी चांस जरूर हो सकता था और शायद यही तरीका था शान मसूद को रन आउट करके आउट किया जाए, उनकी विकेट हासिल की जाए। एक और शानदार गुगली, इस बार बाउंस भी मिला। क्योंकि नए आए हैं हारिस, क्यों ना एक फील्डर स्लिप में लिया जाए। ये रन्स बनाना आसान नहीं होंगे, सिंध की टीम को भी ये जान लेना चाहिए। जिस तरह ये दोनों स्पिनर बॉलिंग कर रहे हैं, मुखालिफ टीम में काशिफ भट्टी हैं और साथ साथ यासिर शाह भी, खुद हारिस सुहेल भी बॉलिंग करेंगे। एक और टॉप स्पिनर, इस बार भी समझने से कासिर रहे हारिस। जी हाँ, भले विकेट हासिल नहीं किए जाहिद महमूद ने, लेकिन बॉलिंग बहुत शानदार रही है, बांध के रखा हुआ है बलूचिस्तान के बैटर्स को। ऑन साइड पे खेलना चाहते थे, शायद ये ऐसा पिच नहीं है कि आप अपनी मर्जी से शॉट खेल सकें। कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी पिच जहां स्किट हो रहा हो सीधा खेलें, या फिर इस तरह से कदमों का इस्तेमाल करें जो सीधे बल्ले के साथ कर दिखाया है। स्ट्राइक अपने पास रखेंगे हारिस 82 पर 3। हारिस सोहेल की वापसी हुई है इस साइड में। इससे पहले हमने देखा कि अली वकास टीम का हिस्सा थे, लेकिन इनके आने से काफ़ी मजबूती आ गई है मिडिल ऑर्डर में। सिंध का बॉलिंग कार्ड अगर हम देखें, 1 विकेट हासिल की सोहेल खान ने, 1 विकेट हासिल की अनवर अली ने, लेकिन अच्छी बॉलिंग रही है। इकोनॉमी अगर हम देखें ज़्यादातर बॉलर्स की 5 से नीचे है, तो एक अच्छा साइन है सिंध क्रिकेट के लिए, क्योंकि जैसे आप आगे कह रहे थे कि 150 रन तक अगर ले जाते हैं तो वो फाइटिंग टोटल होगा और कोशिश करनी चाहिए सिंध को कि 140-150 के दरमियान रखे, क्योंकि बैटिंग लाइन काफ़ी लंबी है, काफ़ी हार्डवर्क करना होगा इस पिच पे। साइम अयूब से एक ही ओवर कराया गया जो के छठे बॉलर हैं, ताकि अनवर अली पर दबाव कम हो सके। सुहेल खान वापस आ गए हैं, क्योंकि विकेटें लेना होंगी, ये जानते हैं सऊद शकील कि अगर विकेटें नहीं लेंगे तो सिंध की टीम अभी भी ये 160 तक पहुंचने की बलूचिस्तान में अहलियत है। साइम अयूब को बॉलिंग करवाने की ऑप्शन एक थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आप 5 प्रॉपर बॉलर्स के साथ जा रहे हैं इस मैच में, और जिस तरीके से बॉलिंग अनवर अली ने की वो तो अपने 4 ओवर्स पूरे करेंगे, क्योंकि फास्ट बॉलर्स को मदद मिल रही है। थोड़ा बाउंस है, बॉल स्किट भी कर रहा है, तो ऐसे मौके पे अगर आप एक पार्ट टाइमर को यूज करते हैं तो अक्सर हमने देखा है कि उससे बैटर्स के रन्स खुल जाते हैं। रखी जरूर है कि इतने ज्यादा रन्स नहीं दिए, लेकिन शायद उतनी जरूरत नहीं थी साइम अयूब को बॉलिंग करवाने की। मंगलजई बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं और आज उनने अपने जो शॉट्स हैं उनको कम किया है। पहले हर गेंद पर विक करने चले जाते थे और कोशिश होती थी कि बाउंड्री ढूंढी जाए, और आज मुल्तान की इस शाम में उन्होंने कोशिश यही की है कि हर गेंद को उसके मेरिट के मुताबिक खेला जाए। अच्छा पुल शॉट, फील्डर वहां पर मौजूद हैं, खासा वक्त है बंगलजई के पास। फास्ट बॉलर को भी अच्छा खेलते हैं, स्पिनर्स को तो इन दिनों ये बढ़ चढ़ के वार करने लगे हैं।
हाँ, जैसे जैसे इन सीनियर्स के साथ बैटिंग करते रहेंगे बेहतरी आती जाएगी उनकी बैटिंग में। और यहाँ पे मैं ज़रूर दाद दूंगा मुश्ताक अहमद जो उनके हेड कोच हैं कि उन्होंने अब्दुल वाहिद बंगलज़ई और हसीबुल्लाह को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है। क्योंकि अगर आप देखें हसीबुल्लाह ओपन करते हैं असद शफीक के साथ, फिर बंगलज़ई आते हैं, फिर शान मसूद और हारिस सोहेल आ जाते हैं। तो जब दो यंगस्टर्स इतने सीनियर्स के साथ खेलेंगे तो सीखने को तो बहुत मिलेगा। हजार उठाकर खेला और ये कैच तकरीबन ले चले थे अनवर अली ने, यहाँ कमाल कोशिश की और ये अगेंस्ट द विंड शॉट खेला था। इसके बावजूद 6 रन पा लिए। उसी वजह से अनवर अली की ज्यादा दिलचस्पी थी। यहाँ लेंथ बॉल था, शॉट सही था, लेकिन स्क्वायर की बाउंड्री बहुत लंबी है और उतनी ही शानदार कोशिश यहाँ पे दाद देनी होगी डेफिनेटली अनवर अली को। और हारिस सोहेल हम जानते हैं उनको ये एरिया पसंद है, वो हिट अच्छी मारते हैं, लेकिन लंबी बाउंड्री शायद यही उनको जहन में होगा उनके। और एक लम्हे के लिए अनवर अली को भी लगा कि शायद जो है वो बाउंड्री के ज्यादा करीब हैं, इसलिए वहीं से उछलने का फैसला किया। एक कदम पीछे लेकर गए नहीं। तो हारिस जो है उस हिसार को अब तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर नजर डालते हैं, कोशिश बहुत शानदार थी, मिडल हुआ था बॉल और हमने देखा है कि कितने फिट क्रिकेटर हैं और फिट क्रिकेटर का ही काम होता है ऐसी बाउंड्रीज को रोक पाना। पिंडी का जो मरहला था वो कैचेस का मरहला था। कई वहां पर यादगार कैचेस देखने में आए। उमर अमीन का जो कैच था वो तो कभी भी नहीं भुलाया जा सकेगा। और एक और इस बार ये आला शॉट और गेंद गई ऑल द वे। हारिस सोहेल ने अब बैटिंग का महाज गरमाने का फैसला किया है मुल्तान में। क्या बहुत ही शानदार शॉट, ये एग्जीक्यूशन बहुत कमाल की रही क्योंकि सीधा मारने गए और यही सही तरीका है ऐसे पिच पे खेलने का। ये रिस्क फ्री शॉट होता है जब आप फेस ऑफ द बैट सीधा रखते हैं। बहुत ही जानदार, बहुत दूर आके बॉल गिरा, ऑलमोस्ट हमारे पास ही गिरा आके। यहाँ पे अब हारिस सोहेल दिखाते हुए कि उनमें अभी भी दम बहुत मौजूद है और जैसे जैसे वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस होने का वक्त करीब आ रहा है, ये बैटर्स भी रन्स करते हुए चले जा रहे हैं। शायद ये चीज़ इनके जहन में ज़रूर होगी कि अपॉर्चुनिटी मौजूद है, अगर परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन के लिए भी उनका सोचा जाएगा। होनी भी चाहिए जब आप इस मकाम पर खेल रहे हैं। नेशनल T20 कप, ये डोमेस्टिक क्रिकेट में ये फ्लैगशिप इवेंट है T20 का, तो जाहिर है कि इनकी अभी भी उम्र है, अभी के पास खासा वक्त है। हारिस के पास देखिए, हम भी बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, पूरा पाकिस्तान ही चाहता है कि हारिस सोहेल जैसा टैलेंट, और बड़ा हैरानगी भी होती है कि उस तरीके से ज़्यादा लंबी क्रिकेट नहीं खेल सके पाकिस्तान की साइड के लिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? फिर गलत खड़ा हुआ था। हाँ, ये एक चांद तो मैं देख रहा हूँ कमेंट्री बॉक्स में काफी दिनों से, और यहाँ पूरे चांद की रात है मुल्तान में। आप लाजवाब कर देते हैं तारिक भाई, आपके साथ कमेंट्री करने का इसीलिए बहुत मज़ा आता है कि कहाँ कहाँ से अल्फाज और कहाँ कहाँ से आप मुहावरे ढूंढ के लाते हैं। मुझे आपकी वो रेड बुक पे नज़र रखनी होगी जिसके अंदर आपका सारा खजाना मौजूद है। ये अच्छा पैसेज है बलूचिस्तान की साइड के लिए। ये पार्टनरशिप अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हारिस के बल्ले से रन्स आ रहे हैं, ये खतरे की घंटी है सिंध के लिए, क्योंकि 150 से रन्स जितने भी ऊपर जाएंगे उतने ही मुश्किलात सिंध के लिए बढ़ती चली जाएंगी। आज जो दोपहर में मैच खेला गया था उसमें 153 रन का हदफ खैबर पख्तूनख्वा की जो मजबूत और इनफॉर्म बैटिंग लाइनअप है वो नहीं हासिल कर सकी थी। से वो स्ट्रेच करने पर मजबूर किया जाहिद महमूद ने। देखना चाहिए कि क्या ये कदमों का इस्तेमाल करेंगे, आगे बढ़कर वार करेंगे, लेकिन अभी रहना चाहते हैं वहीं पर और स्ट्राइक को रोटेट करना चाहते हैं। जी अभी उस तरीके से अननेसेसरी रिस्क लेने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हारिस सोहेल दूसरी तरफ बहुत शानदार खेल रहे हैं। आखिरी ओवर में 2 छक्के लगाए थे
तो अगर आपके साथ एक सीनियर मेंबर खेल रहा हो तो आपका रोल आसान हो जाता है, सिंगल लीजिए, उनको स्ट्राइक दीजिए। बड़े भाई हैं, फिर आप ज्यादा खतरों से ना खेलिए। बिल्कुल, आप उनको खेलने दीजिए क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। बड़े एतमाद से खेला। हारिस जो हैं, इनकी महारत वो काबिल दीद है। स्पिन बॉलिंग के खिलाफ अगेंस्ट द स्पिन खेलना हो, विद द स्पिन खेलना हो। 15 ओवर्स और 100 रन बलोचिस्तान के यहाँ पर मुकम्मल हुए 3 विकेटों के नुकसान पे। क्राउड अच्छा बिल्ड हुआ है आज मुल्तान स्टेडियम में। एक बार फिर ओवर टू यू तारिक भाई। तीस रन पर मौजूद है अब्दुल वाहिद बंगलज़ई। 18 रन बनाए हारिस सोहेल ने, 25 रन बनाए थे शान मसूद ने, लेकिन अनलकी रहे कि रन आउट हो गए। 15 ओवर्स के बाद 100 पर 3। और यहाँ पर स्टंप हो जाएंगे। और अच्छी डिलीवरी, और इस बार फ्लाइट में बीट कर लिया। बाहर आकर हिट आउट करना चाहते थे। पिछली ओवर में उन्होंने 2 छक्के लगाए थे, लेकिन इस मर्तबा देखिए गेंद सीम पर गिरी और हारिस लेग साइड में खेलने की गरज से आउट हो गए। यहाँ छोटे भाई को रोकते रोकते बड़े भाई ने गलती कर डाली। अच्छी इनिंग रही 18। अच्छा आगाज मिल गया था इनिंग को। स्टंप हुए सरफराज से। 100 पे 4 बलूचिस्तान। बंगलज़ई आज के टॉप स्कोरर हैं इस इनिंग्स में, और अब उनको साथ देने के लिए हुसैन तलत आए हैं जो बैटिंग ऑलराउंडर हैं। पहले 6 नंबर्स में ये बैटिंग करते रहे हैं और ये भी अच्छे फिनिशर हैं हुसैन तलत। अच्छा वक्त है, स्पिन को अच्छा खेलते हैं। यहाँ स्पिनर ही इस वक्त कार्रवाई करने लगे हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर हैं और इनका शुमार भी उन अनलकी क्रिकेटर्स में होता है जिनको आगाज अच्छा मिला, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, लेकिन उस पोजीशन को होल्ड नहीं कर सके। क्योंकि वहाँ पे अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करेंगे तो पोजीशन बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन टैलेंट और स्किल की कमी नहीं है। बाएं हाथ के एक बैट्समैन गए हैं और दूसरे लेफ्ट हैंडर ने वो जगह ली है, लेकिन अबरार अहमद जो हैं इनने बड़ा कमाल कर दिखाया है। बहुत अच्छा उनका ये मुकाबला रहा। पिछले मैच में थोड़ा सा महंगे साबित हुए थे और आज इस पिच पर इन्होंने किसी भी बैट्समैन को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। बहुत जल्दी निकल आए थे हारिस सोहेल। अगर हम इस पे दोबारा नजर डालें तो बॉल रिलीज से पहले ही उन्होंने अपने कदमों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। शायद प्री प्लान्ड आगे निकले, और इब्रार जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, जितने एक्सपीरियंस अब उनको आहिस्ता आहिस्ता आ गया है, आसानी से वो हिट खाने वाले हैं नहीं ऐसी पिच पे। अभी तक कोई भी इनकी गेंद पर छक्का चौका नहीं लगा अबरार अहमद की, और ये इनकी कितनी बड़ी जीत है कि इन्होंने शान मसूद को भी बॉलिंग की जो स्पिन को अच्छा खेलते हैं। इसके अलावा हारिस सोहेल वो स्पिन के पाकिस्तान में बेहतरीन बैट्समैनों में से हैं, और खुद बंगलज़ई भी बाउंड्री लगाए बगैर ज़्यादा देर रहते नहीं है। अच्छा रीड कर लिया था इन्होंने हारिस को,
कि वो क्रीज से बाहर निकलने वाले हैं अटैकिंग मोड में, तो गेंद को उनसे दूर लेकर गए। बहुत ही शानदार बॉलिंग रही और वही बात, थोड़ा जल्दी निकल आए थे। प्री प्लान्ड शॉट था शायद कि उन्होंने जहन में सोच लिया था कि मैंने हिट मारना ही मारना है। देखा नहीं कि बॉलर कैसे बॉल कर रहा है, कहाँ लेंथ है, किस लाइन पे बॉल हुआ है। डिसअपॉइंटेड जरूर होंगे। इस बार गेंद को फ्लाइट दी और इसे उठा खेला लॉन्ग ऑन के ऊपर से। एक और शानदार छक्के के लिए बंगल सही बड़ी उम्दा बैटिंग कर रहे हैं और बलोचिस्तान के लिए आज उन्होंने मुसलसल फाइट की है। या थोड़ा लालच आ गया था इब्रार के दिल में, थोड़ा छोड़ा हुआ बॉल था, हवा दी बॉल को, और शायद ऐसा वक्त आ गया है कि अब बंगल सही को लॉन्ग हैंडल यूज करना होगा, क्योंकि काफी देर से क्रीज पे मौजूद हैं। 31 बॉलों का सामना कर लिया है और आखिरी 4 ओवर्स हैं इस बॉल के बाद, तो अब रन्स बटोरने होंगे। गेंद के बाउंस होने का इंतजार किया, लेग साइड में खेला, अच्छी कमिटमेंट दिखा रहे हैं। अबरार अहमद खुद गए क्योंकि जानते थे दायरे में सामने फील्डर नहीं है स्क्वायर के। ये काबिल तारीफ स्पेल अबरार अहमद का, आज उन्होंने बिल्कुल सर उठाने का मौका नहीं दिया मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों को। 110 पर 4। Balochistan has scuffled against this bowling from Sindh. They've kept things quiet for a while. Sohail Khan getting one each for Ibrar Ahmed and Anwar Ali. Still overs are left. Would be looking to finish big, Balochistan. You have to give credit to how Sindh operated their bowlers. Fielding has been superb tonight. They've managed to get breakthroughs at regular intervals. What target are they looking, Shafas? Minimum of 150, you would have to say. We saw 153 was enough in the first game. You would assume that the ball will slide on a little bit better under the lights. And for 20 for Mir Hamza, he's been brought back into the attack. A little bit of injury scare earlier. You can see the tape on his left elbow. But he's fit and ready to go. Crucial phase of the game. Last 4 overs. He's bagged that, and he's got miles on it. Mir Hamza coming into his second spell, and the first delivery has sailed over. Bangalzai is making an announcement. Bangalzai has really been clear with his plans. Anything length, he's prepared to go for it any stage of the innings. He's well set. He read the line and the length very early. Flat batted it over long on. Incredible stroke. Inching in on yet another 50 in this tournament. Full toss, couldn't really capitalize it. Straight to the deep cover. Has to be very precise with his line and length, Mir Hamza. And we look at that. Just the shuffle and then forward press. Right out of the middle of the bat. You look at his setup when he comes back on strike next time. He's pretty open in his stance. That left leg is out of the way. Hussain Talat, though, he struggled. Batting opportunities have been few and far between. 16 not out, 20, another 24 in the middle. But batting at number 6, sometimes he doesn't have a lot of time, but still has enough time to make impact on this game. Oh, confusion there, and he's safe. Has been problems in running between the wickets for Balochistan tonight. Hussain Talat survived this one. Bangalzai once again at it. He threatens to run and then he stops. You cannot do that. It's the third time he's done it.
Shan Masood had lost his wicket already, and Hussain Talat was gone for all money if Hamza had hit the stumps. They're having a little chat mid-wicket, but Bangalzai has to sort this out very quickly. Yeah, it's the shortest of fractions when you judge the ball and you give a call to your partner. You have to take a sprint out of your blocks very quickly. Another full toss. Haven't really managed to put it in the gap. 7 already, 8 already of this over. They're pressing the accelerator now. Sindh has so far had quite decent control. Like I said, this wicket doesn't look like it's a high-scoring wicket. 150 was enough. And Sindh has problems of their own when it comes to their batting lineup. Danish Aziz has been benched today. Faraz getting another opportunity. Could Balochistan get up to 150? Got tall on him. Was there to be hit. Really kept on rising. We've seen a lot of extra bounce on this surface today. Yeah, we've seen batters struggled with this length to play the forceful pull shot or hook shot. Mir Hamza's angle was away from Bangalzai, but the ball's been skidding. This is what the skipper said, Khalid Usman said at the presentations. This wicket, some of the balls are really skidding and bouncing quite steeply. That's why we haven't seen good pull shots. Third man comes up in the circle. They've pushed deep square leg now to the boundary. Got fine leg, long on and deep cover. It's very well bowled. It was a slow one, just the bounce undoing Hussain Talat. Good comeback from Mir Hamza after getting hit for that 6. Only 3 runs in the remaining 5 deliveries. He finishes off his over with this dot. Hussain Talat once again couldn't cope with the bounce. 17 gone, 119 for 4. It's a decent crowd in here at Multan Cricket Stadium. Under lights, it's always a delight to watch your stars in action. And always brings out a smile from them when they see themselves on the big screen. First game of this Kingdom Valley National T20 Cup under lights, and it has brought a decent crowd, like Marina said. We expect more and more people to come now that every game, there's one game a day, will be the night game, the second one. It's giving the room. There's a fielder there and just going away. He did well to keep the boundary safe. Mir Hamza managed to grab a couple. That length, it's not easy to put away for batters. Mir Hamza was scrambling at the end, that slide in. Not the conventional way of the slide, but was able to put the ball back into field of play. Was he in contact with any of the ropes when he picked up the ball? No. Good save. Wholehearted effort. He's injured himself already once. But saved his team a couple of runs. That's good delivery. Really good delivery. Anwar Ali giving no room whatsoever to Bangalzai. It's too shy of another 50 Bangalzai. Little bit of tail in as well. Little bit of reverse for Anwar Ali. This wicket is pretty abrasive in the square as well, now that it's third day of cricket. So we played on 3 different pitches. Anwar Ali getting the ball to tail in.
Not as prodigiously as his famous spell was back in the day. That's found the connection, but not the boundary. Brilliant fielding in the deep. Umair bin Yusuf has been exceptional, and that brings up 50 for Bangalzai. He's been superb for Balochistan, his 4th 50. His team applauding, and he's been very, very consistent. And the best thing about him is that he's holding the innings together. He's playing like a main man, and that's the kind of consistency you expect from your main man. But this was all about Umair bin Yusuf. Airborne, just push the ball back into the field of play. They need that sort of commitment in the field, Sindh. Oh, that's beautifully put away. Delicate and smart batting from Bangalzai, exploiting the room outside off stump. Beautiful touch there from Bangalzai. He's opening up that offside for himself. That length was too full. At the last moment, just turned the face of the bat. Look at that. How still he was. The poise and grace. Superb piece of timing and placement. Bangalzai. He's really in full flight now. That's the sort of acceleration Balochistan was hoping for. And he's the man, Bangalzai. Brute force, fielder coming underneath it. Has he managed to hold on to it? I don't think so. So the captain, yeah, he's saying, signaling to the umpires that he might have not able to grab it. Was hit with brute force, quite flat one. Didn't come out of the middle of the bat, but this is not on Saud. He would take this 9 times out of 10. But very sportingly tells Anwar Ali that he's not claiming this catch. Bangalzai gets a life. Just adjusting that 45 fielder in the circle. Anwar Ali, he'll be eyeing that Yorker. Oh, full toss, and it's been dispatched over the boundary, and rightly so. This is not good bowling from him. Dismissive. Bangalzai put away that full toss with disdain. Anwar Ali with a huge grunt of disappointment, obviously after that drop. But look at Bangalzai, free, uncomplicated swing of the bat. And look at that soar in the skies. This was a huge over. Bangalzai taking full advantage of the life offered to him by the Sindh skipper. 133 for 4. $14 runs coming. The Anwar Ali's over. This is how Bangalzai has managed to knit his innings. He was patient early on, but then he announced himself. Two big hits up to his 50. This time Hussain Talat, they're running hard, but they don't need to because he picked up the gap precisely. For a moment, it looked like they're just going to cross over for 2, but it fairly raced across in the middle of the gap. Once again, it felt like it was the thick inside half of the bat. But such is the power of these players. Big bats, and the outfield has done the rest. Nowhere near in the picture. The sweepers. This is a good start to the over for Balochistan. Oh, just had to deport both that shot. Sohail Khan is a very smart bowler. He reads the batters well and the game. Brilliant delivery. All the youngsters who want to
play this shot and they see their stars play this shot, one thing they have to do, they have to get in position nice and early and be still when they're looking to make the contact. If you're on the move, you have very little chance. Look, Hussain Talat was still moving when that ball hit the bat. Got third man deep, and so is Fine Leg. Not point of this shot. Another slow one, deceiving him with the pace. They have to hurry. No problems there. That's also a good point. When you see the field is back, it's really a very low percentage shot. That's the right thing. Brings back the form man on the strike. Bangal says 60 of just 41. That 150 that we were talking about just a while ago, it looks like if Balochistan doesn't get there, they'll be disappointed. Probably they'll be eyeing a few more than that. He is. Bangalzai stays on strike. He's hitting and timing the ball really sweetly. Brilliant bowling. Another slow one in the right areas. That's what you can associate with Sohail Khan at death overs. He's a wily old campaigner, Sohail Khan. Even at this stage of his career, he is really feisty. Never gives up the fight. And delivers the back of the hand slow delivery to perfection. Bangalzai, third man is up, fine leg is up. Mid-off is also up in the ring. Another full toss. And he's found the boundary. The fielder couldn't cut it off. He's turning things up for Balochistan. Staying one step ahead of the bowler. That was full toss, low full toss, but he picked his spot really nicely. Umair bin Yusuf was lurking, but it was just away from him. This is the feature of Bangalzai. He's really been good with his shot selection. Found the gaps. It's easy to just go out and bludgeon the bowling, but there's more thought in that Bangalzai innings. He's batting very, very intelligently. Anything slightly on a shorter side, he puts it away. No problems there. They've pushed the 45 back on the boundary. Straight down the ground, pushing hard. Yeah. Good dive in for Bangalzai. He wants to keep the strike. 19 overs gone, Balochistan 143 for 4. Got the resources to hit big. Ashif Bhatti padded up. Junaid Khan. But Bangalzai is the key. Has been the key in this tonight's game. They're happy witnessing some cricket on their local ground. And the entertainment has been good. We saw a terrific game, the first game of the day. And this one also promises to be a close contest. Balochistan really fighting hard to get a competitive total. Thanks to Bangalzai's effort. Little hold up in play as he's getting some attention after that dive on the last ball of the last over. A selfie is never too far away. Kingdom Valley National T20 Cup. Second leg began yesterday here at Multan. Under light. And things are turning around for a few teams. The table is wide open now. You can hear the music thumping in the background. Happy faces. These are great pictures. Just the start of a bumper season, like I was mentioning earlier. There's plenty of cricket. White ball cricket, test cricket, domestic cricket, PSL. Non-stop
Mir Hamza with the responsibility to contain runs in the last over of this innings. 143 on board for Balochistan. Bangalzai on 65. He's played superb knock. Away outside, that'll be a wide. The idea wasn't bad, but execution couldn't be spot on. Looks like Hamza will be angling the ball away for those wide Yorkers. This time a little bit too wide. Surely he won't want to bowl length to Bangalzai at this stage. Fine leg is up. Square leg is up as well. Just behind the square. You got deep mid wicket and long on. Offside is well protected because he's aiming for those wide Yorkers. 3 sweepers on the offside. And another one. Not a good start. Mir Hamza struggling to hit that line. Like you said, the idea is right. He's looking to hide the ball from Bangalzai, but it's a bit too far, and it's a little bit. Rashid Riaz is having a word with Hussain Talat. I think he wants a fresh pair of gloves. Rashid is not allowing that. He goes aerial, the fielder is there. Oh, he dropped it. Ibrar Ahmed with a sitter. And he's put it down. And he's put down Bangalzai. Well, the plan was perfect. The execution was as well from Hamza. Just the last bit of that plan. Ibrar catching the ball. That didn't happen. There's no dew, no dampness. The butterfingers letting the ball slip through. And look at that reaction change very quickly from Hamza. Well, I expected him to change a bit more drastically than that. He kept his cool quite well here. Just the look of distraught. Couldn't believe it. Straightforward catch. Hussain Talat this time testing the fielders. Anwar Ali coming. Oh, he's flicked it bad. But we have to see if he's managed to save the boundary or not. I don't think he's signaling the maximum to the umpire. We saw a collision last night. We saw some near collisions quite recently. And this was just right in front of us. It looked like they both were going to collide with each other. No clear calling as well. Anwar Ali had to keep one eye on the fielder, one eye on the ball. And in the end, when he touched the ball, he stepped onto the skirtings. Bit too late to release the ball. Wow. Was a brilliant effort though. If anyone could get it, it was Anwar Ali. But the moment he grabbed on to that ball, his foot was touching those skirtings. And that's the signal maximum. And Rashid Riaz is really putting his foot down and not allowing Hussain Talat a change of gloves. But Anwar Ali, if he had run full tilt and not worried about the man coming in from long on, he probably would have had more time to compose himself. Good Yorker, really good Yorker. Mir Hamza. Luck hasn't been on his side tonight. 153 has been reached. That was the target earlier on. Hussain Talat didn't quite hit the middle of the bat. He must have had some good piece of willow there. Anwar Ali just stepping on the skirting and immediately raising his hand very sportingly. Good bowling. Mir Hamza. That's how calculated he is. Always on target. Not a good start to the over, but he's trying to make it up for it.
Yeah. After those 2 wides, he's really made a good comeback. At 6 was slightly fortunate. Bangalzai had a fair share of luck in this innings as well. That can happen in this format. Once you're prepared to take chances, you make your own luck. I'm going to run hard. Just single available. He's angry. He wanted to make most of it. These are the chances. Bangalzai, this one went flat. Without Shakil, the culprit this time. And then this one, Ibrar. Very straightforward catch. Put down. It's interesting. These players see these on the big screen. And here the crowd put probably more pressure on him. But only 1 ball left. Final delivery of the innings. Oh, he managed to squeeze it. Just enough with given, and he managed to get a boundary of the last delivery. He's not happy. Should have been a better effort from the fielder. Steam coming out of his ears. He really feels hard done by. If you look at it again, the fielder was too upright to throw himself, stop that ball. The execution was perfect, the wide yorker. But how upright was the fielder? The ball went underneath him before he could bend down and attempt to stop the delivery. 158 what Sindh got. Momentum clearly with Balochistan in the last couple of overs. They managed to get 58 runs from the last 5 overs. That's the recovery they were targeting for. 158 on board for Sindh. They started off really well. Managed to get wickets every now and then. But Bangalzai, the man who stood for Balochistan, will have to make some effort. Balochistan's innings was dominated by that 67 of just 47 deliveries by Abdul Wahid Bangalzai. Once again cashing in on his good form. Shan Masood looked good. He made 25, but towards the end Hussain Talat and Haris Sohail played little cameos to get Balochistan up above that 150, and eventually they went on to finish with 158 for 4. Sindh was dominating in the early overs. 3 they managed to bag. Sohail Khan, Ibrar Ahmed and Anwar Ali, 1 each. Mir Hamza was expensive in his last over. They managed to contain Balochistan on 158. That's how started Balochistan. As the Shafiq did struggle a bit to time the ball. And that was the end of it. The misery came to an end with a miscued shot. There was nowhere near the ball. Sibullah, some glorious drives off the back foot and front foot as well. He put away anything loose offered by Sindh. And this was a brilliant delivery from Anwar Ali. Bangalzai joined in the middle. Khan Masood looked like this partnership would give some momentum back. Runs kept on flowing. Everything short was put away, and then this glance. Bangalzai on the other end, he kept on displaying his shots. This was the suicide for Balochistan. Bangalzai, he called it and then he aborted. Haris Sohail, he came in and he started to flourish with the bat. 2 big blows. Down the track he went. He was undone by this delivery. Skiddy by Ibrar. Bangalzai though remained right till the end, putting bad balls away. Any length bowling, he was really severe. Not just the power, but the touch as well. Had its fair share of luck. Skipper Saud Shakil flooring one there. Then at full toss would put away nicely. Hussain Talat also played a little cameo towards the end. Yes, Bangalzai reaching his 50 during the process. Another slice of luck. Abrar
couldn't hold on to that catch, and that's how the innings finished, with the boundary, with the high. Balochistan making 58 in the last 5 overs, really taking away the momentum at the break. 159 is the target for Sindh. It shouldn't be a hard task. Balochistan will have to work hard. 7.95 is the required. We'll join you for the run chase after a break. Welcome back. Match 22, Balochistan versus Sindh at the Multan Cricket Stadium. First game under full lights. And we are hoping that we get a good game just like the first one. Weather, 30 degrees. It's just slightly cooler. In fact, quite cooler than yesterday after that sandstorm. It seems that the heat has just said a bit of a goodbye. 74% humidity. But what is it really like outside? Let's join Shah Faisal. Well, it's quite pleasant, like Sikandar just said. Compared to what we had in the previous games, it's been boiling hot, but with the lights on, it's quite pleasant. Nice little breeze as well. Checking about the conditions, because it's first game under lights. If I show you something,
there's very little dew, absolutely close to nothing. So the conditions will remain the same in terms of the outfield for both the teams. In terms of the wicket as well, the ball should slide on better. But the weather, there's no advantage for the team that's batting second because of the dew. So lack of dew. And with that, I'll take you back. Back to you, Sikandar. No, back at you. I want to ask you a question. You just touch the grass with your fingertips. We want you to actually rub your hand on it and show us what exactly the dew is like. There's no dew, Sikandar. There's no even dew. If, yeah, no dew at all. Even if I rub my whole hand on it, there's Okay. no dew coming out on it. So Great. the conditions are not favoring anybody. You just have to play good cricket. Now all you need to do is give the mic and turn around and be at long on. No, I don't want to do that. Well, you know, you're bound to get no dew because there's cloud cover all day. And when there's cloud cover, dew doesn't form. Abdul Wahid Bangalzai, maybe he cost Shan Masood his wicket in that run out, but 67 for 47, he made sure that he bats all the way through. Hussain Talat was slow to start off, got one or two big hits, but 19 of 11. It has all been a contribution from here and there. And it's pushed the score to 158 for 4. If you really look at this score, you feel it's less, but then if you compare it to the first game, you might say they're in the game. Yeah, Sohail Khan bowled really well with the new ball especially. Ibrahim Ahmed also bowled very well. Economy 5.75 just. Anwar Ali, look at those economy. 11, he was the expensive one alongside Mir Hamza. And no wicket for Zaid Mahmood and Saim Ayub. Sharjeel Khan, if his bat explodes runs today, then Sindh is talking. With him, he's got an informed batter. We'll talk about him as well, but Sharjeel Khan's numbers, very much evident that he's been around for a while. His strike rate is important, just touching around 140. So it's just about that one day where he just loses his mind and hits you all over. Saim Ayub, he's your more class textbook. And he's in good form. That's the important thing. So if you get Saim early, then you are surely putting Sindh on the back foot straight away. Absolutely. I think he's been the pick of the batters in this tournament. He's up against a very experienced Junaid Khan. 197 wickets. That shows that he's got lots of experience. 6 times he's taken 4 wickets. Economy also very good. 7.49. Best of 4 for 12. $158 scored by Balochistan, and Sindh needing 159 to win. And what we have seen in this ground, that chase has not been an easy task, but we can guarantee you this is going to be a cracker of a game. Yeah. Umpire Rashid Riaz, he's a man of a final word. Didn't allow Hussain Talat to change his gloves. Time was running out. Sent the 12th man back. That's how it should be. I'm the boss. Straight away, wrong place to bowl to Sharjeel Khan. He'll start with a boundary. That hip, it belongs to him. Don't bowl there. Good start, very good start. This is what Sindh is hoping, that if he gets going, it's not going to be a big task. Have a look at that. That is his favorite shot onto his leg stump. Anything there is not going to miss out on that. And this pitch will definitely suit his style of play. That might just give him that confidence he wants. If you get the ball in the middle of the bat into one of your favorite shots, you feel I've arrived. Junaid needs to pitch it up a little and then just move it a bit, like he bowled yesterday against the Southern Punjab team, 80 of Southern Punjab. That's more like it. That's more like it. It's going down maybe, yes, but that's more like it. A touch high too. Good comeback delivery by Junaid Khan. Disappointed though. Well, so are most of the bowlers when they go for the peel. Yeah. Oh.
touch and go, but still I would say I would give it to Rashid Riaz. A little high and going down also. Disappointed. It's going to be a good battle, I tell you, between Junaid and Shajil. Picked it up nicely, protection around. Ahmad Butt picks up on the bounce. Lucky. Junaid Khan, it was onto his leg stump. Could have placed it anywhere. But he decided to find the fielder there. Ahmad Butt. I'm really excited to see him play. Saim Ayub. I can safely say that he has been the best batter that we have witnessed in this tournament. He's played well with good strike rate too. Just amazing to see somebody like Saim Ayub keeping Shajil Khan quiet. We've seen that happen in this tournament. In the last game also, he was the one more dasher, more getting runs inside the circle. He's worried because after that win of Northern, that points table, it's just very interesting, and no team is safe now. You'll have to play good cricket to get to that semi-final spot. And let's have a look at the points table. Khyber Pakhtunkhwa sitting comfortable at the top, but they've lost last two games that they've played. 10 points. Northern, they've done really well. They're at the second point. Balochistan are playing today. If they lose this one, so Sindh will come at 8. That will make things very interesting for the match tomorrow between Central Punjab and ATF Southern Punjab. No team is safe at the moment. Good over apart from that first ball. 5 for no loss. Not what he would exactly want. These numbers, 49 is best. It's been struggle. Other than that one inning, last time he looked good for his 18 runs against Northern. And Sindh would expect him to go big today because this is a big game. Sindh are coming into this game after a couple of losses. They would want to get back to that winning ways. Khurram Shahzad on the other hand, very pacey, very nippy. He swings the ball, but if he can get it today, let's see. It's a good ball. It's a good ball for any batter in the world, and he's well dug out by Sharjeel. You see, if you can be Jimmy Anderson, Glenn McGrath in this match, in this pitch, ball the good areas, don't try too much, you can put them under pressure. But if you ball one short one on the leg, goes for 4, what usually you feel out here with the bowlers, especially the fast bowlers, if you're getting dot balls, 1, 2, 3, first 3 balls, then you try something different, I want a wicket. And that's when you get hit. If something's working for you, carry on with it. You won't get predictable. In the air, it's not in control. Ahmad was a little slow. Maybe he couldn't have reached Kashyap Bhatti rather. Wait. Not the right choice early on in the inning, Saim Ayub, but we've seen that this shot has given him a lot of runs. But probably he'll have to wait a little. Look at that. Just wanted to go over mid-wicket area. Lucky that it didn't carry to that fielder at third. As long as Shajil is there with you, you don't have to be reckless, Saim Ayub.
Shot will go to the boundary. No point chasing that. Fantastic. Shajil Khan at his very best. We know that once he gets going, that total won't be enough, I tell you. And this is his trademark shot. He's got so many runs with that shot over the years. No chance for the fielder. This outfield is lightning. Yeah, outside the off stump is a bit of a problem. Got to keep it within the stumps for him. At a good leg. Cramp him up for space. He doesn't like that. Ask him. He doesn't like that. I'm telling you, that's a boundary you wouldn't worry about as a bowler. You get it close to his body, you know it, I know it, we all know it. Lucky, very lucky. He could have easily chopped it onto the stumps. And as you said, that this is the area that you should be looking to bowl most of the deliveries to Shajil Khan. You just got to be consistent in this area and you will get rewarded. Well, whatever works, it's the boundary that matters for Shajil Khan. He's off to a good start. Three men on the onside. That's gone. Shajil Khan, one bounce and over the ropes. If you ball him on his leg side, he's gonna punish you all day long, and that is exactly what happened. Wrong line. He just waits for these sort of deliveries and punishes them. You look at his 5 deliveries, 1 width outside the off stump, 4, 1 around the hip, 4, 1 within the stumps, inside edge. A Yorker within the stumps, not being able to put it away. 3 boundaries already. Oh, gone! Oh, he's dropped it. Hasibullah has coughed that up. How did he do that with gloves on? I have no idea. 2 overs gone, 20 for no loss. Hasibullah, what have you done? This is a big wicket. You don't want to be missing out on any opportunity. Shajil Khan, it's a big wicket. And it was a simple catch. Just hurried onto it. Probably a touch late, the reaction, or maybe he's standing a little up. Because he's a pacey bowler. He's got good pace. That hurried onto him. Young Hasibullah. He's usually a very safe wicketkeeper, but this catch might cost them a lot. 20 without loss after 2. You can count from here the balls were within the stumps, how they are played by him and how safe are they for the bowler and the fielding side. He's gone hard at the ball. He's taken the thumb of that left glove. And he's probably asking him, told you so many times, get new gloves. So important on a serious note, so to give. It's in the air. Now take that catch. It was in the stumps. Oh, it's moving. Yes. Oh, he's dropped it. I cannot believe that. Balochistan has coughed 2 up. He was underneath the ball. For a moment I thought he might not reach there, but he was comfortably underneath it. Luck working for Shajil Khan. Look at that, just wanted to go towards onside, thick outside edge. Was in the air for a long time. Again Hasibullah into action. Probably that is the reason it might have put confusion in Haris Sohail's. It was such an easy catch, and somebody like Haris Sohail, you don't want to be missing out. Come on. Give it.
Nothing's going right for Balochistan. It's just very interesting to see. He had his eyes on it, but Hasibullah, the reaction I would want to see again. He called for it too. That might have put confusion in his mind. What is he say? What is he thinking? What am I supposed to do? The youngster drops it, a senior pro drops it. It's nothing working for Balochistan at the moment. Yeah, was very well fielded by Ahmad, but that ball was travelling. Nobody's there at the non-strikers. Keeper wanted to throw the ball because Sharjeel was just strolling. Wish they could have Ahmad, but everywhere, because this is brilliant stuff. This is top stuff, because that was hit really hard. That's good stuff, really good stuff by Ahmad, but saved 3 runs, definitely. When the ball came to Hasibullah, he wanted to throw the ball at non-strikers. Nobody was backing up. Sharjeel was just strolling. He had no idea. I wish I can show it to you, what Sharjeel was doing. Have a look at this. Was in there for a long time, and look at Hasibullah, he just called for it first, but still that is no justification. It was in the air for a long time. Should be taking it. Oh, this is beautiful. This is excellent. Top stuff by Saimi Ayub this time, learning from Sharjeel. If you can do it, I'll do it too. 3 gone, 27 for none. This is a very good start by Sindh, although they've been helped by some poor fielding, a couple of catches going down, but they'll take it any day. 27, the required runs are 132. The camp is a happy camp at the moment. As we see change in the bowling, surprise, surprise. Mr. Shafiq, 2 left-handers. Let's see what he can do. .36 years of age. He's got 4 wickets at this level. Best of 2 for 7. It's more of a tactical move against 2 left-handers. Sharjeel Khan is living by his luck. 2 chances, 1 inside edge. Gone through again. This is poor stuff. This is not good cricket from Balochistan. Just giving away easy runs and opportunities to Sindh side. That was a beautiful pickup shot. Not ideally timed, because he wanted to play it towards mid-wicket. Lucky that the fielder at square leg was quite square. It's been the match of drop catches. Bangalzai was dropped twice. Sharjeel Khan already dropped twice. How many more? Let's see. That is 4 runs. Beautifully timed. Sharjeel Khan, if you give him opportunities, is not going to leave you, because we know what he is capable of. Gave himself room, and that power. Wow.
He's running away with the show. Sharjeel Khan, 27 of 14. Aggression. They played for same teams for a long time. They would know. The trouble for Balochistan is that they've got one leg spinner and one left arm spinner. That's the aggression. Frustration rather, because they've given him two opportunities. So the trouble is that they've got one leg spinner in form of Yasir Shah and Kashif Bhatti, another left arm spinner, and two left hand batters on crease. It's not going to be easy job. Yeah, just to hold up, bails are broken. You're going to get a new set of bails because of that throw from Asad Shafiq. I'm not sure that Asad Shafiq has been given the ball. Of course, he's an off spinner and they want to get rid of Sharjeel. You've got to be very, very accurate and get that right amount of turn to beat him. He's got a bail now to replace the broken one. Now this is a good start. 9 and over. It's humid. You can just tell by the face, sweating. They can afford that because they're already off to a flyer. Run rate required has come down to 7.79. And as long as Sharjeel Khan stays, this is not going to be enough total. Good end to the over. 4 gone, 33 for none. सिंध की टीम को शर्जील की विकेट इस मैच में पीछे धकेल सकती थी, लेकिन आज किस्मत मेहरबान है शर्जील खान पर, और उतनी ही ये नाम मेहरबान है जुनैद खान पर। इस टूर्नामेंट में उनकी गेंदों पर कुछ अंपायर्स के भी ऐसे फैसले थे जिन पर बात हो सकती है, कुछ उनकी गेंदों पर कैचेस गिरे। बहुत बदकिस्मत बॉलर रहे जुनैद खान, शायद सबसे ज्यादा इस नेशनल T20 कप के। बिल्कुल, और बलूचिस्तान के फील्डर्स ने उनका साथ नहीं दिया। कीमती मौके शर्जील को दिए और शर्जील आपको दिलकश स्ट्रोक, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर थे, इससे एक ही रन बन सका, लेकिन टाइमिंग इसका कोई नेमुल बदल नहीं है। साइम अयूब जो सिंध के टॉप स्कोरर हैं 260 रन के साथ, आज वो सानवी किरदार में हैं, क्योंकि शर्जील खान वो मूड में लगते हैं। अभी तक शर्जील अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके। इस विकेट पे जो बाउंस है वो शर्जील के स्टाइल को सूट करेगा। स्क्वायर ऑफ द विकेट अच्छा खेलते हैं, कट पुल पिकअप शॉट शर्जील की खासियत है। इस पिच में खासी पेस मौजूद है और बैट्समैनों को मुश्किल पेश आई है आज,
क्यूरेटर्स ने खासी मेहनत की है इस सीजन में पिचेस की तैयारी के लिए, और उस्मान बाटा जो यहाँ पर मौजूद हैं पीसीबी के क्यूरेटर्स, उन्होंने अपनी निगरानी में ये पिचेस तैयार कराई। और ये देखिए तेज पिच पर गेंद भी तेज निकली, विकेट कीपर इसकी तवक्को नहीं कर रहे थे और फिर हारिस सुहेल ने ये गलती की। आमतौर पर होता ये कि जब इतना हाई कैच जाता है तो एक की बजाय दो फील्डर जमा हो जाते हैं गेंद के नीचे। हालांकि यहाँ हारिस के आसपास तो फील्डर था नहीं और ये बहुत महंगा हो सकता है। शर्जील के खिलाफ गलती। ये पिच अच्छी है, शाम के वक्त गेंद बेहतर बल्ले पर हम कह सकते हैं कि आ रही है। बॉल भी बल्ले पर आ रहा है और स्विंग भी देखने में मिल रही है। नई बॉल से भी बॉल स्विंग हो रहा था। जो ड्रॉप कैच आपने खुरम शहजाद की गेंद पे देखा, वहां स्विंग हुआ। और ये आखिरी बॉल भी खुरम शहजाद और अमाद भट्ट जो अच्छे आउट स्विंग कराते हैं। जब आप कैच की बात कर रहे थे शर्जील की, जब बॉल इतना ऊंचा चला जाए आपको सोचने का बहुत ज्यादा मौका मिल जाता है और बसा औकात कुछ ज्यादा ही टाइम होता है, जिसकी वजह से आप अपनी तवज्जो जो है वो खो बैठते हैं। राशिद रियाज हमतन मसरूफ रहे हैं इस मैच में। पहली इनिंग्स के इख्तिताम में हुसैन तलत के साथ उनकी काफी बातचीत चलती रही और अब कप्तान यासिर शाह को अपनी पोजीशन छोड़कर आए राशिद रियाज और मिड ऑफ पर आकर उनसे कोई बात की। यहाँ अंपायर ज्यादा खुश है नहीं। राशिद फाइन लेग को आगे ला गया, स्कोर लेग अभी भी पीछे है और लॉन्ग ऑन भी, लेकिन शर्जील ने इसे खेल दिया पॉइंट की जानिब। एक और चौका। शर्जील खान आज खुल खेलने के मूड में है और अपने पुराने रंग में और उस आहंग के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जब पिच में इतनी पेस और बाउंस हो तो आपको ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं होती। शर्जील जिनके साथ एसोसिएट किया जाता है कि वो हमेशा पावर यूज करते हैं, इस मर्तबा तो बिल्कुल शानदार टाइमिंग उन्होंने हासिल की। ये इनको राह दिखाई दोनों फील्डर के दरमियान से बाउंड्री के लिए। ज्यादा विड्थ नहीं थी, लेकिन शर्जील जब इस तरह के मूड में हो, इस तरह की बॉलिंग को छोड़ते नहीं। ये भी अच्छी बात है, चौका लगाया और उसके बाद स्ट्राइक रोटेशन की। मॉडर्न डे बैटर्स इस चीज पर यकीन हालांकि नहीं रखते, लेकिन अगर बॉल अच्छा है तो और टारगेट कोई ज्यादा नहीं है तो इसमें हर्ज नहीं है। साइम अयूब की बैटिंग देखने वाली होगी इस विकेट पर। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन पीछे भेज दिया गया है और स्क्वायर लेग पर भी फील्डर डीप में मौजूद है। ऑफ साइड पर कोई स्वीपर नहीं है क्योंकि पावर प्ले चल रहा है अभी। यहाँ साइम का ये स्ट्रोक रोकने के लिए बाउंड्री पर भेजा गया था फील्डर को, लेकिन इस बार टाइमिंग इतनी लाजवाब थी कि उन्हें मौका ही नहीं मिल सका। इस ओवर को साइन ऑफ किया इस दिल का शॉन ड्राइव के जरिए, वॉकिंग ऑन ड्राइव साइम अयूब का। इससे काबिल दीद शॉट हो नहीं सकता। बहुत आला टाइमिंग और बैलेंस था, क्योंकि बॉल स्विंग हुआ आखिरी लम्हे पर, लेकिन उस स्विंग को कोप किया क्योंकि उनका बैलेंस बहुत अच्छा था। और 5 के बाद 45 पर कोई आउट नहीं। परेशानी के साए गहरे होते जा रहे हैं। शर्जील और साइम अयूब दोनों अपने स्ट्रोक खेलते हुए नजर आए हैं। विकेट हासिल करना होगी और एक और चौका। ये एक मोतबर बैट्समैन का पुल शॉट था
और शर्जील खान को जो ही लेंथ नजर आई वो इस पे पिल पड़े। ये शर्जील का सिग्नेचर पुल शॉट है, फ्रंट फुट से ही सिर्फ वेट ट्रांसफर करते हैं, हवा में भी ये शॉट खेलते हैं और अलोंग द ग्राउंड भी। इस मर्तबा भरपूर कुव्वत वाला स्ट्रोक था और इस विकेट पे जैसे मैं पहले कह रहा था ये शॉट्स खेल सकते हैं आप। और हम परेशान हैं कि ज्यादा बुरी बॉल नहीं थी इन शर्जील जैसे बैट्समैन के लिए, जरूरी नहीं कि आप बुरी बॉल कराएं, ऐसे ही वो लेंथ पिक कर लेते हैं अपने जोन में। काफी बड़ी रेंज है उनके पास शॉट्स की। तेज बाउंसर किया, देखिए विकेट कीपर को भी उनके हाथ में भी दर्द हुआ। गेंद रोकने के बाद ग्लव उतार दिए, अंपायर ने वाइड का इशारा किया था और गेंद ऐसा लगता है कि इनकी हथेली में नीचे लगी है, सब तकलीफ के आलम में है। अच्छी विकेट कीपिंग आज से पहले करते रहे थे, पहले कैच गिरा चुके हैं, यहाँ ग्लव्स जो है वो इस गेंद को मिडल नहीं कर सके। थोड़ा बॉल देखिए बिल्कुल आखिरी लम्हे पे वॉबल हुआ और ग्लव्स के बीचों बीच लगने के बजाय उंगलियों पर जाकर लगा। इस बाउंस ने न सिर्फ बैटर्स को परेशान किया बल्कि हसीबुल्लाह को भी एक कैच छोड़ चुके हैं और अभी भी ऐसा लगता है कि जो उनके बाएं हाथ की उंगलियों पर जाके बॉल लगी है। किंगडम वैली रॉयल लाइफस्टाइल, आप इनके फेसबुक पेज पर जा सकते हैं और इनामात जीतने का मौका, एक्साइटिंग प्राइसेस हैं और आप भी अगले विनर हो सकते हैं। यहां पे विनर जरूर क्यूरेटर हैं। जिस तरह की पिचेस तैयार की गई हैं इस नेशनल T20 में, न सिर्फ रावलपिंडी में बल्कि यहां भी ऐसा लगता है डिफरेंट कंडीशंस ऑफर कर रही हैं पिचेस और बैट्समैन और बॉलर्स के लिए। उनकी स्किल्स की आजमाइश है कि जब आपको रोज एडजस्ट करना पड़े डिफरेंट विकेटों पर खेलने का, हालांकि वेन्यू दो ही हैं लेकिन कंडीशंस चेंज होती रही हैं। यहाँ तो यहाँ अब ये तीसरा दिन है टूर्नामेंट का और आज कंडीशंस मुख्तलिफ हैं पहले 2 दिन के मुकाबले में। जिस तरह हम बात कर रहे थे कि बड़ी मेहनत की है यहाँ जो उस्मान बाटा हैं, इसके अलावा रियाज अहमद जो यहाँ पे हेड क्यूरेटर हैं मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। हालांकि मुल्तान की में बड़ी सख्त गर्मी होती है लेकिन दिन भर वो काम करते रहे हैं और जो औसत स्कोर है वो मुख्तलिफ पिचेस पर तारिक मुख्तलिफ रन हमें देखने को मिले। ये पिच नंबर 8 है जिस पर आज मैचेस हो रहे हैं और 152 यहाँ पहले मैच में विनिंग मजमुआ साबित हुआ कि पिच नंबर 4 पर जो मैचेस हुए वहां पर एवरेज स्कोर 167 था, पिच नंबर 2 पर 180। ये डिफरेंट कंडीशंस ऑफर कर रही हैं। एक ही स्क्वायर है लेकिन दाद देनी होगी क्यूरेटर्स को। और ऑफ सीजन में काफी काम किया गया पिचेस पर, न सिर्फ यहाँ मुल्तान में बल्कि रावलपिंडी, लाहौर और कराची में भी अच्छी पिचेस ही अच्छी क्रिकेट का सबब बनी है इस टूर्नामेंट में। यहाँ काफ़ी अरसे से खास तौर पर जो पिछला डोमेस्टिक सीजन था उसमें कायदे आजम ट्रॉफी में यहाँ ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव करने के लिए गए शर्जील खान, लेकिन गेंद तेज निकल गई। अच्छा एंगल क्रिएट किया खुरम शहजाद ने। तो जो 2021 की जो कायदे आजम ट्रॉफी थी उसमें विकेटें ऐसी नहीं थी कि गेंद जो है बल्ले को बीट कर सके। ज़्यादातर जो मैचेस थे वो हार जीत का फैसला हुए बगैर खत्म हुए थे, खासतौर पर पंजाब का जो मरहला था। पहले 5 राउंड्स में और ये सिंध का टूर्नामेंट अभी तक। और फुल शॉट खेला, पूरे इख्तियार में नजर आए शर्जील खान जिन्होंने कुछ देर पहले स्क्वायर के सामने चौका लगाया था, पीछे बाउंड्री पे लगाई और 40 के पेटे में पहुंच गए। वो बड़ा खतरा बन चुके हैं इस मौके पर बलोचिस्तान के बॉलर्स के लिए। मतलब काफी टाइट लाइन थी लेकिन अच्छी बैट स्पीड, अपने शॉट को एडजस्ट किया।
ज्यादा फाइन बॉल चली गई, लेकिन पावर प्ले है, बड़े बड़े गैप्स मौजूद हैं डीप में। 4 रन हासिल किए। नॉर्मली शर्जील का ये पुल शॉट ज्यादा स्क्वायर जाता है मिड विकेट की तरफ। और एक और इस बार फ्लैश किया ऑफ सिस्टम के बाहर और गेंद तेज गई, फाइन गई। यहाँ ये मुल्तान की ही पिच है। एक मरतबा फिर बॉल क्लाइंब करते हुए शर्जील तक गई, बाउंस के साथ कोप नहीं किया। लेंथ तो मौजूद थी शॉट के लिए, लेकिन बाउंस की वजह से बाहरी किनारा लगा और तकरीबन बॉल उठते हुए एक टिप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर गई। उसी बाउंस का ये शाखसाना है जो न सिर्फ बैटर्स को स्ट्रोक प्ले पर उकसाती है बल्कि बॉलर्स को भी हम वक्त खेल में रखती है। विकेट लिए बगैर चारा नहीं है, लेकिन स्लिप इस वक्त जो है वो नजर नहीं आ रही, क्योंकि शर्जील की मौजूदगी में जो 9 फील्डर्स होते हैं विकेट कीपर और बॉलर के अलावा वो कम पड़ जाते हैं, बस से बुलंद हो गए। पिछला मैच सिर्फ एक स्ट्रोक के फर्क से सिंध की टीम नहीं जीत सकी थी, लेकिन आज उनके बॉलर्स ने कमाल कमबैक किया और बैट्समैन जो हैं, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है, साइम अयूब और शर्जील खान, वो भी दोनों कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी बॉलिंग को। जो कप्तान के लिए आसान नहीं है शर्जील के लिए स्लिप रखना जिस तरह वो बैटिंग कर रहे हैं। दूसरी जानिब साइम अयूब सूझबूझ की इनिंग्स खेल रहे हैं, बिल्कुल जल्दी नहीं कर रहे, जानते हैं जब सामने रन्स बन रहे हैं। तो पावर प्ले में 59 रन्स सिंध ने बनाए, बहुत ही उम्दा आगाज। सिंध का कैंप काफी मुतमईन है। टूर्नामेंट में चौथी मर्तबा उन्होंने 50 या उससे ज्यादा की ओपनिंग पार्टनरशिप हासिल की है मुसलसल 4 मैचों में। का मतलब है कि क्या वो राइट टाइम पर पीक कर रहे हैं। राशिद रियाज का इशारा, पावर प्ले का खेल खत्म हुआ। अब बलोचिस्तान को फील्ड खोलने का मौका मिलेगा, लेकिन जैसा तारिक ने कहा बलोचिस्तान को विकेट्स की जरूरत है। यहाँ अभी भी स्पिनर जो हैं उनके आसार नहीं है। इस पिच पर स्पिनर्स को आज मदद मिलती हुई हमने देखा। यासिर शाह जो हैं, यहाँ असद शफीक से एक ओवर जरूर कराया गया था, लेकिन जो स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं वो नजर में नहीं आए। यासिर शाह को बॉलिंग करनी चाहिए यहाँ, क्योंकि बाएं हाथ के बैट्समैन को चैलेंज पेश करते हैं, क्योंकि वक्त गुजर रहा है और अब सिर्फ 100 रन बाकी रह गए, बाकी मांदा 84 गेंदों में। यासिर भी बाउंस को एंजॉय करेंगे यहाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं। शर्जील ने इस पिच के बाउंस और पेस को वो बहुत महसूस हुए हैं। 26 गेंदों में 46 रन और पावर प्ले में उन्होंने मनमानी की, उनके कैचेस गिराए गए, उसके बाद उन्होंने स्क्वायर ड्राइव किए, पुल शॉट खेले और ये देखिए ये वो कैच था जो होना चाहिए था। और उसके बाद यहाँ पर भी बहुत वक्त मिल गया था और सुहेल ने ये मौका भी जाने दिया। यही वजह कि 11 चौके लग चुके हैं ये पहले 6 ओवर्स में, बहुत बड़ी निस्बत है। शर्जील जब होंगे क्रीज पर तो बाउंड्री परसेंटेज तो हाई होगी ही, और अब आप साइम को भी कह सकते हैं जितनी उनके पास भी रेंज है। मुझे जरूर यहाँ पर एक दिलचस्पी है कि साइम को इस बाउंसी पिच पर खेलता हुआ देखूं, क्योंकि जिस तरह वो पिकअप शॉट है उनकी और ड्राइव है बिल्कुल क्लासिकल लेफ्ट हैंडर्स वाली। कट और पुल ज्यादा देखने में अभी आई नहीं, लेकिन इस विकेट पर उन्हें मौका जरूर मिलेगा। जरा रूम उन्हें मिले, ये भी उनके खेल की एक खासियत है जिस पर नजर रखनी होगी। गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन
अहमद भट्ट ने उन्हें आगे बढ़ते हुए देख लिया। शर्जील का बेहतरीन स्कोर 49 है इस चैंपियनशिप में, उनकी कोई निस्फ सेंचुरी नहीं है। साइम टॉप स्कोरर हैं, लेकिन निस्फ सेंचुरी की इस फॉर्मेट में कोई अहमियत होनी भी नहीं चाहिए। आपका स्ट्राइक रेट जो है, अगर आप 40 रन बना लेते हैं इस तरह के स्ट्राइक रेट के साथ जैसे शर्जील खेल रहे हैं, 174 आज उनका है एसआर, तो उसकी ज़्यादा अहमियत होती है। इसमें 30 रन भी बहुत होते हैं अगर आपने 18-19 गेंदों पर बना लिए। हाँ, फ्लिक कर दिया एसआर, स्क्वायर लेके फील्डर खासे स्क्वायर थे, इसलिए 4 रन और शर्जील खान ने पहली निस्फ सेंचुरी बना ली इस सीजन की। उन्होंने यहाँ पर मुखालिफ टीम की बॉलिंग को उड़ा कर रख दिया है। 2 कैचेस जरूर ड्रॉप हुए और ये उसी का नतीजा है कि उन्होंने 16वीं निस्फ सेंचुरी बनाई अपने करियर की। देखिए, लेट खेला ऑफ द टॉस, बॉल स्विंग जरूर हुई लेकिन स्विंग होकर उनके बल्ले के बीचों बीच आ गई। फाइन लेग के फील्डर को ही बीट करना था सिर्फ। बजा तौर पे हकदार हैं इस निस्फ सेंचुरी के। सिंध की तरफ से सबसे तेज रफ्तार निस्फ सेंचुरी है सीजन की। इससे पहले 32 गेंदों में साइम अयूब ने 50 रन बनाए थे। अगर 30 से कम गेंदों में आप 50 रन बना लेते हैं तो फिर उसकी कदर जो है वो बहुत होनी चाहिए। महत मुसलसल गेंद को स्विंग कराने में कामयाब हो रहे हैं। परफेक्ट बॉल अभी तक कर नहीं पाए जो लेफ्ट हैंडर को विकेटों के सामने ट्रैप कर सकें, लेकिन बलूचिस्तान के पास ज्यादा वक्त नहीं है। जैसे तारिक बता रहे थे, अब तो 100 से भी कम रन रह गए हैं। विकेटें एक के बाद दीगरे हासिल करनी होंगी, लेकिन कौन है वो बॉलर जो हाथ खड़ा करे और कप्तान को कहे कि मैं आपको विकेट लेकर देता हूं, और कप्तान ने खुद अभी बॉल नहीं किए। ये काफी हैरान कुन है। एक और अच्छा स्ट्रोक, और ये सरासर टाइमिंग, बिल्कुल कुव्वत सर्फ नहीं की, और यही सबसे बड़ी खूबी है साइम अयूब की। बहुत ही आला टाइमिंग, बहुत शानदार टाइमिंग, बिल्कुल भी कुव्वत सर्फ नहीं की। गेंद को आने दिया और अपने बल्ले का रुख सिर्फ मोड़ा। पिच का पेस और बाउंस जो है, इसने बहुत ही अच्छी स्ट्रोक प्ले को दावत दी है, और सिंध के दोनों ओपनर्स ने बिल्कुल इस मुकाबले को लगता है एक तरफा कर दिया। 7 के बाद 70 पे कोई आउट नहीं। ये मुल्तान शहर कदीम शहर, और यहाँ सादन पंजाब में खानों की भी सबसे आला वैरायटी आपको मुल्तान की गलियों और बाजारों में मिलती है। बारबेक्यू का खास तौर पर एहतमाम किया जाता है। रात के पहले पहरों में आप यहाँ खानों से महसूस हो सकते हैं, और बहुत जायका है यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के खानों में। शाजी जी बिल्कुल सही कहा तारिक, और काफी महसूस हो रहे हैं हम भी। आपसे पूछना चाहूंगा, आपने कुछ कबाब या टिक्के ट्राई किए यहाँ के? यहाँ कोशिश करेंगे आइंदा जो है वो आपकी सोबत से फायदा उठाएं, आपके नक्शे कदम पर चले। जी अली यूनुस की मेजबानी का हमें शर्फ हासिल है, क्योंकि अली का ताल्लुक इसी इलाके से है, और काफ़ी उन्होंने हमें मुल्तान में घुमाया फिराया, और यहाँ की रिच जो कल्चर और हिस्ट्री है और जो क्विजीन है वो यकीनन पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से काफ़ी मुख्तलिफ है। ज़रूर आप आइए मुल्तान और एंजॉय कीजिए यहाँ का कल्चर और विरसा, आपको यकीनन मज़ा आएगा। ये अच्छा शॉट, लेकिन स्क्वायर पर फील्डर की गई है राहबंदी जो है ऑफ साइड में। अच्छी फील्डिंग देखने में आई। अभी ये जो हमने मज़ार देखा था इस पैकेज में, ये हज़रत शाह रुकन आलम का, ये 14वीं सदी का है। इससे भी अंदाज़ा होता है कि मुल्तान
में कितना कदीम विरसा है भैया। अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, बस आगे निकल गए थे और वापस पलटने पे मजबूर किया बंगल सही ने। यासिर की आमद का इंतजार था, गुगली उन्होंने कराई। बंगल सही पूरी तरह फाइट करते हुए। जो पॉइंट में मैं बनाना चाह रहा था वो ये है कि और उठा मारा इसे, गेंद गैप में गई और बाउंड्री पार भी। एक और एफर्टलेस छक्का शर्जील खान का, और आज उन्हें रोकना मुश्किल हो रहा है फास्ट बॉलर के बाद स्पिनर्स के लिए भी, क्योंकि गलती गुंजाइश शर्जील सेट हूं तो ना होने के बराबर रहती है। अपने बैकफुट प्ले की जो उनकी शोहरत है उस पर बिल्कुल पूरा उतरते हुए कहना चाह रहा था कि चारों टीमों ने जिसने इस विकेट पे बैटिंग की है उसमें सिंध की टीम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल नजर आई है। जो हॉरिजॉन्टल बैट, जो शॉट्स हैं विकेट के स्क्वायर, स्पेस और स्पिन के खिलाफ, शर्जील और साइम ने उसका भरपूर मुजाहरा किया। शान मसूद इस बार थे बाउंड्री पर, और शर्जील की जो खासियत है जो दूसरों से उनको मुमताज करती है कि ये बिल्कुल खड़े खड़े ही छक्का चौका लगा देते हैं। अक्सर जो बैट्समैन होते हैं स्पिनर पर चार्ज करते हैं, लेकिन इनमें टाइमिंग बेपनाह है। हाथों और आंखों का जो इनका रब्त होता है वो बहुत मिसाली। यासिर शाह का पहला ओवर बेअसर रहा, 9 रन दे गए, 79 मजमूई स्कोर 8 ओवर्स के बाद। बट Kabaddi in operation for the first time. That's the key. You don't get him early, he'll make you pay for it. Especially when you drop him twice, that means you're allowing him to bat 3 times. But nevertheless, his knock is always entertaining when he gets going. Man can single-handedly snatch the game away from you. You can see the two comparison between the players who are batting out there. Saim Ayub, 18 of 16 deliveries. He's just been having the best seat in the house, watching Sherjeel bat the way he is batting. 60 of 34 with 10 boundaries and a 6. Take it, third time. Now you're looking at bowling 13 people out, not 10. And 3 of them are Sharjeel Khan. Disappointed Khurram Shahzad this time. And all these chances, they were all simple ones, no difficult chance. All went into the hands and out. This one again, oh, this level, you should be taking those. Catch it is the call, but no, it's very far away. There's no chance for Hussain Talat or Ahmad Butt to get to it. Things would have been much better had they taken those 3 chances. Balochistan, this one being the latest one. What could be the reason? Are they not concentrating enough? No, it's just that judging at what height the ball is, if it's dipping on you, and it's going to be swirling. It will have a huge spin on that ball. So you've got to be attentive if you're standing in backward point of these regions. Whenever the batsman is cutting the ball, it will come spinning your way. Yeah, you make a good point, but all those catches, including this one, this just went straight. At this level,
Just poor fielding, poor concentration. End of 9, 84 for none. They needed a win. Sindh camp. Still worried faces. Look at Sohail Khan, stunned. It's just not moving until the game is over. This boy is amazing. Abrar. The way he bowls. Such a good talent. And what I like about him is his keenness to get a wicket every ball. He feels the world is lost when he misses an opportunity. It's just very, very below average and ordinary fielding from Balochistan today. They've just let them off the hook every time they look like in control. Sides have been performing well in Pindi, have just come here. The day off has just put them off everything. I don't want to think that this is their third consecutive game and the bodies are tired. That could be the reason, but these are professional boys, these are strong boys. The humidity maybe, the weather, everything playing the part. One bounce. It's not working for Balochistan, I tell you. This time Khurram Shahzad didn't attempt it. Captain's bowling, screaming, catch it, catch it. Not even able to stop those singles. Dot balls should create some kind of pressure. Even if you need 30 runs of 50 balls, you give dot balls to Sharjeel, he won't like it. He'll try something. This time, nice shot just to find those vacant zones. Then you can play it in the air without worry. Sharjeel at his very best. When he's hitting like that, he means business. That flick of the wrist, beautiful. And he's played spinners equally well. And that onside, he just fancies that onside. He plays it so strong. And that is the sort of inning that will definitely boost the confidence of Sharjeel and Sindh side. They've been searching for this form from Sharjeel. And he's delivered. 10 overs, 88 for none. They could have been easily 3 down, but they're not. They're 88 for none. Opener is still there. Sharjeel Khan on 64, Saim Ayub 21. He's held one end together and has really been there for Sharjeel Khan, giving him strike on regular basis. Plenty of batting still to come. Umair bin Yusuf, Saud Shakil, Sarfaraz Ahmed, Faraz Ali, they all can bat. And I feel this Sindh side, this combination is a very good one. Saim Ayub, 22, he's been quiet. That's a rare sight, I tell you, because he's been in excellent touch all throughout the tournament. The Rawalpindi leg, he played beautifully. Life is much easier when you have a partner like Sharjeel on the other end, because all the bulk of runs have been scored by him. So for somebody like Saim Ayub, he can take his time, just stay there on the pitch, go not out. Let him do his work. He will keep scoring runs.
They just keep following him. Don't give him room. He's got them in a position where they shouldn't be worried about going for those big hits. That's the difference between the two of 19 runs. In fact, it's just a huge difference in T20 cricket. With 19 ahead, you're always ahead. Oh, and gone right through. It's unbelievable. He's suggesting that the ball just deviated off that rough, but he didn't have it covered at all. Slower one, gave it some air, but good footwork shown by Saimu, and he has hit it really high, really hard rather, and Yasir Shah making a mess of it. So whatever Balochistan is trying, it's still courtesy some bad fielding as well. They're not able to stop those boundaries. They're coming. 14 boundaries and a 6 in this innings. 10 of them belong to Sharjeel. The 6 also is Sharjeel's. .96 for none after 11. Just an excellent initiative. Deaf International Cricket Champions Trophy 2022. It's happening in Dubai from 1st October till 9th October. That's a great thing. Second one, bowler's end. That's where they'll target. No, in fact, the keeper's end. I was looking at Sharjeel's end. Have a look at the running. Yeah, it went to the best of their fielder. And guess what? I think he's just given up hope also. Just a lazy effort. Shouldn't have been two. Yasir Shah, what can he do? 61 more run. They need wickets, not just 1, 2, 3 maybe. And in quick succession. Just been an amazing turnaround for these couple of teams, the table toppers. Khyber Pakhtunkhwa losing 2 games, Balochistan losing a couple of games, and probably most likely they're going to lose this one too. So it's changing from Pindi Lake to Multan. The lucks are changing. Probably these teams like Sindh, Central Punjab, they've got that combination right now. And it has made that points table very interesting. We still don't know. That brings up the 100 for Sindh, and guess what? They haven't lost any wicket. Only themselves to blame. Balochistan, they had 3 opportunities to get Sharjeel out. Nevertheless, if someone's not ready to get you out, 100 up is good. And that's a one-handed shot. Hand goes off the handle, but still will clear because it's coming off Sharjeel's bat. Whoa, that is amazing. That is proper. That is big. Look at that. Just the force of this man. The power. Just one hand. I wonder if he had the power of both hands, we would have landed probably on the roof. Exceptional talent. He can only smile. Because Sharjeel knows that they're not taking his chances. They're not getting him out. 53 or 50 now. Chance? No. Because the keeper screams catch it every time. Now this game is racing away. 49 or 49 required. Fantastic. This is where he loves. And again, that power that he holds. Beautiful.
Big one. Another maximum. 6-4-6. 20 of the over. 116 for no loss. He wants to go back early, that is for sure. He's going to finish it early. He's in a hurry. 20 runs of Yasir Shah's over, and this one being the latest hit. Came down the track and over that long on boundary. That is excellent cricket. हर गुजरती गेंद और हर गुजरते ओवर के साथ सिंध की जो इस मैच में हालत है वो और बेहतर होती जा रही है और अब सिर्फ 5.3 की शरह इनको चाहिए है यहाँ से जीतने के लिए और दोनों ओपनर्स अब तक नाकाबिल शिकस्त हैं। शर्जील खान पे बहुत बात हो चुकी है जो अपनी सेंचुरी करीब है, लेकिन साइम अयूब ने जिस तरह सर झुकाकर बैटिंग की है वो जानते हैं कि शर्जील सामने से धुआंधार खेल रहे हैं और अब उन्होंने भी ये बड़ा शॉट खेलने का फैसला किया, लेकिन ये महंगा पड़ा और लो कैच लिया। फ्लड लाइट्स में कैचेस पकड़ना, हाई कैचेस पकड़ना आसान नहीं होता, लेकिन ये कर दिखाया है हुसैन तलत ने और काशिफ भट्टी ने कि पहली कामयाबी से हमकिनार किया बलोचिस्तान को। पिछले मैच में सऊद शकील ने बहुत ही आला खेल पेश किया था और आज फिर 1 डाउन पोजीशन पर ये आ गए हैं। टॉप स्कोरर थे सिंध के लिए गुज़श्ता मुकाबले में। ये जितनी इनकी औसत है ये इससे बहुत बेहतर खिलाड़ी हैं सऊद शकील, लेकिन आज शर्जील ने बिल्कुल तहस नहस करके रख दिया है। यहाँ बलोचिस्तान जहाँ तक बॉलिंग अटैक का ताल्लुक है साइम अयूब बहुत तहम्मुल से खेल रहे थे, लेकिन इस बार बड़ी शॉट अटेम्प्ट करने गए, इसकी खास जरूरत नहीं थी। कदमों का इस्तेमाल किया था, मिडिल सही नहीं कर पाए और इस वजह से कैच दे बैठे। जिस तरह की बैटिंग शर्जील कर रहे थे, बल्कि दोनों ही दाद देनी पड़ेगी साइम को, जिस तरह अपना किरदार समझते हैं बहुत जल्दी। सिंध बआसानी इस टारगेट को अबूर कर सकता था बगैर किसी नुकसान के। यही गेंद निस्बतन आहिस्ता की काशिफ भट्टी ने और उनको बाउंस मिला। इस पिच में बाउंस है जिसका स्पिनर्स ने भी फायदा उठाया। ये देखिए गेंद तकरीबन जाकर ये लगी सीने पर कप्तान साउथ के, और क्योंकि हेलमेट से भी टकरा गई थी इसलिए अंपायर ने ये जरूरी समझा कि उनकी खैरियत दरियाफ्त की जाए। पहली गेंद पर स्वीप शॉट मारने चले गए थे। अच्छी फॉर्म में है, कप्तान के तौर पे भी अच्छा लीड किया है सिंध को। कंकशन के प्रोटोकॉल यही कहते हैं कि अगर हेलमेट से टकराए बॉल तो उसका जायजा जरूर लिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये उस्मान अरशद बाटा हैं और उनके साथ मौजूद हैं क्यूरेटर रियाज अहमद। ये फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, एक ज़माने में सुई नॉर्दर्न गैस के कप्तान हुआ करते थे उस्मान अरशद। उनके वालिद जो अरशद बाटा थे वो भी बड़े मशहूर खिलाड़ी थे क्रिकेट के पाकिस्तान में। अरशद परवेज़ बाटा, उनके बड़े रिकॉर्ड्स हैं। उन्होंने 1978 में वो इंग्लैंड के दौरे पर जाने वाली पाकिस्तान टीम का भी हिस्सा थे। उन्होंने वनडे मैचेस खेले थे। 13 सेंचुरियां हैं उस्मान अरशद की भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो पिचेस के मामलात हैं इस वक्त वो महफूज हाथों में। साथ देनी पड़ेगी, जिस तरह की हमने पिंडी में भी पिचेस देखी, यहाँ मुल्तान में पीसीबी काफी इन्वेस्ट कर रहा है बेहतरी की तरफ।
लेट खेल दिया और यही वजह थी कि बीट किया। फील्डर जरा सा बाहर थे थर्ड मैन पोजीशन पर। खुरम शहजाद के पास कोई मौका नहीं था। सऊद शकील का ये पहला स्कोरिंग शॉट जिस पर उनको 4 रन मिले। वो जल्दी रीड कर लिया था कि इतना रूम है, इसको गाइड कर सके। जैसे आपने कहा बहुत लेट खेला है, नजरें रखी गेंद पे, गेंद को बल्ले पे आते देखा। इस बार फ्लाइट दी सऊद शकील अगले ओवर में फिर स्ट्राइक करने के मजाज होंगे। फिर 6 रन दिए काशिफ ने इस ओवर में एक विकेट के साथ 122 पर है। स्ट्राइकिंग की तादाद आज बढ़ गई है। रात के मैच में मौसम भी बेहतर है और एक अट्रैक्शन जरूर होती है अंडर लाइट्स क्रिकेट देखने की। मरीना, आपको क्रिकेट खेलने का शौक जो है किससे देखकर आप पैदा हुआ था? इसका जवाब आप तो जानते ही हैं। मेरे चचा मसूद इकबाल, उनको देख के जरूर शौक आया था और हौसला अफजाई ज्यादा हुई। इमरान खान ने जब वर्ल्ड कप जीता तब काफी एक जुनून सवार हुआ था तकरीबन सारे ही पाकिस्तानियों पे। क्योंकि अक्सर ये होता है क्रिकेट का शौक जो है, जब आप पहली बार स्टेडियम आते हैं तो वो उस वक्त ज़्यादा वो पैदा होता है, खुद खेलने का भी, इन क्रिकेटर्स जैसा बनने का भी। जुनैद खान वापस आ गए और बदकिस्मत रहे जुनैद खान की गेंदों पर कैचेस ड्रॉप हुए। रावलपिंडी में भी, यहाँ पर भी। कट शॉट 4। सऊद शकील का ये फेवर्ड एरिया है और इसे लेट खेला ताकि गेंद पॉइंट के फील्डर के पास जाने से जाए। बिल्कुल भी हिलने का मौका नहीं था फील्डर के पास और यहाँ पे बहुत ही अच्छे बैलेंस के साथ खेलते हैं सऊद शकील। जिस तरह का स्टार्ट मिल गया वह सिंध को और जिस तरह की जारहाना बैटिंग हो रही है, बड़े दिल से आए हैं और अपनी शॉट्स दिखाने का भरपूर मौका इन्हें मिल रहा है। एक और स्कोर कट, इस बार फिर मुश्किल में है काशिफ भट्टी और मुसलसल दूसरा चौका। ये रुकनी चाहिए थी बाउंड्री जुनैद खान, इसलिए हम देख सकते हैं कि खासे बरहम नजर आते हैं। बेहतर फील्डिंग एफर्ट हो सकती थी लेकिन एक बार फिर रूम दिया आउटसाइड ऑफ स्टंप। देखें इस बार पिछला पांव लेके गए थे बॉल की जानिब, हाथ जरूर डाला था लेकिन रोकने में नाकाम रहे। आज मामूली फील्डिंग की है बलूचिस्तान ने, कैचेस बहुत ड्रॉप किए। यहाँ इन्होंने अपने दोनों हाथ जो है वो गेंद के ऊपर रख दिए, गेंद को हटाने की बजाय। अब मैदान का कोई भी ऐसा कॉर्नर बचा नहीं है T20 में जहां आप किसी कमजोर फील्डर को छुपा सकें। कप्तानों के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है और बहुत जरूरी हो गया है कि आपके पास अच्छे फील्डर हों। खासतौर पर जो बाउंड्री राइडर्स हैं इनका किरदार तो और ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल, जिस तरह की सर्फेसेस हैं और जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, अव्वल तो बैटर्स बहुत कम चांस देते हैं और अगर चांस दें और आप उसका फायदा ना उठा सकें, कैचेस ना पकड़ें, तो फिर दुगनी मुसीबत पड़ जाती है। अपनी फॉर्म बहाल की हुई है सऊद शकील ने। उन्हें कुछ वक्त लगा है इस फॉर्मेट से आशना होने में, लेकिन पिछले मैच में उनका स्ट्राइक रेट बहुत उम्दा रहा था। सिंध के लिए ये अच्छी खबर है कि इस टीम ने एक उठान ले ली है। यहाँ पर मुल्तान में पहुँचने के बाद शर्जील खान भी फॉर्म में आ गए हैं, वो टूर्नामेंट के पहले सेंचुरी मेकर बन सकते हैं। बॉलर्स ने भी आज बड़ी उम्दा बॉलिंग की, खासतौर पर दोनों स्पिनर्स ने। बस 2 तजुर्बेकार सीमर हैं नई गेंद पे।
आड़े हाथों लिया शर्जील ने आज, पेसर्स को भी स्पिनर्स को भी, और रही सही कसर बलूचिस्तान ने पूरी की उन्हें मौके दे के। जिस तरह की सरफेस है, अच्छा गेंद आ रहा है बल्ले पे, हाइट अच्छी है, इन्हें पसंद है जब तेज गेंद निकलता है। ये अच्छा बाउंसर था जुनैद खान की जानिब से, नजर जरूर गई थी एम्पायर पे कि कहीं वाइड का इशारा ना करें। अब सिर्फ 27 रन सिंध को दरकार हैं और शर्जील को 14 रन चाहिए 100 के लिए। बहुत ज्यादा जो खतरे के रन होते हैं वो लेना गवारा करते नहीं है शर्जील खान। ज्यादा शौकीन नहीं है, ये दोनों शौकीन जरूर हैं इवनिंग वॉक के। बिल्कुल। मेरा ख्याल है सिकंदर ने जबरदस्ती शाह फैसल को मनाया है। ये आप कह रही हैं? मैं हकीकत जानती हूँ। आज अच्छा मौसम है मुल्तान में, और बाउंस, स्टीप बाउंस, पेस भी। जुनैद खान अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि वो कामयाबी हासिल करें शर्जील के खिलाफ। देखिए विकेट कीपर ने अपनी चोटी के तकरीबन सामने जाकर ये कलेक्शन की। अच्छा लग रहा है इस पिच पर, जो है सिर्फ ट्रू बैट्समैन ही रन बना सकते हैं। 132 पर 1। ठीक है शाबाश। Come on, Cash. सिंध की टीम इस वक्त पोजीशन में है कि वो जल्दी इस मैच को ख़त्म करे। उन्हें 26 रन की ज़रूरत है और आज कामयाबी की सूरत में सिंध की पॉइंट्स टेबल पर पोजीशन दूसरी हो जाएगी। उनकी ये चौथी कामयाबी होगी, 8 पॉइंट्स हो जाएंगे। उनकी नेट रन रेट जो है वो दूसरी टीमों से बहुत बेहतर है, आज और बेहतर हो जाएगी शर्जील की इस इनिंग्स की बदौलत। बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा सिंध को। एक नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल पर, जिस तरह टीम्स खड़ी हैं। खैबर पख्तूनख्वा को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा नॉर्दर्न के हाथों, और सिंध का अगर आप नेट रन रेट देखें, जैसे आपने कहा कि आज की जीत से जिस तरह की जीत हासिल करेंगे जरूर बढ़ेगा इनका नेट रन रेट, और ओपन हो गया अब ये टूर्नामेंट। अच्छी क्रिकेट देखने को मिली। और दूसरी तरफ ये होगा कि जो बलोचिस्तान है उनको जो है वो चौथे नंबर पर आना पड़ेगा, फिर उनकी हालत जो है वो भी खतरे में होगी। सेंट्रल पंजाब की टीम ने अभी तक 2 मैचेस जीते हैं, अब वो कोई भी हार के मुतामिल नहीं हो सकते। एक मैच में भी अगर सेंट्रल पंजाब को मजीद शिकस्त हुई तो फिर वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। मुल्तान आके काफी टीमों का पासा पलट गया है। ATF सदर्न पंजाब ने भी कामयाबी हासिल की थी बलूचिस्तान के लिए, लेकिन वो DL मेथड पे जरूर था। कल बड़ा अहम मैच है सेंट्रल पंजाब और सदर्न पंजाब की टीमों के दरमियान, और सेंट्रल ने जिस तरह पिछले मैच में हराया KP की ताकतवर टीम को, उनके भी हौसले बढ़े होंगे और हुनैन ने वो अच्छा इजाफा साबित हुए। हुनैन शाह ने तेज रफ्तार बॉलिंग की। थोड़ा सा सस्ताने लगे हैं शर्जील जूं जूं अपनी सेंचुरी के करीब आए हैं। इस ओवर में तमाम 6 गेंदों पर 6 रन एक एक करके मिले सिंध को 138 पर 1।
100 रन बस 3 खिलाड़ी आउट थे। बलूचिस्तान की टीम खासी पीछे है, 38 रन का फर्क है और 2 विकेटों का भी। और उसकी बड़ी वजह दोनों टीमों के दरमियान ये जो फर्क है ये शर्जील खान की वजह से है। टूर्नामेंट की हाईएस्ट इनिंग्स खेलने के लिए उन्हें एक बाउंड्री दरकार है। 92 रन्स इनके ओपनिंग पार्टनर साइम अयूब ने रावलपिंडी में स्कोर किए थे। वही टॉप इनिंग्स है इन मुकाबलों की। और खुरम शहजाद वापस आए, बदकिस्मत थे, उनकी गेंद पर कैच गिरा था शर्जील का और उसके बाद से पीछे मुड़कर नहीं देखा। सनसनीखेज पुल शॉट। शर्जील खान ने इस चैंपियनशिप की सबसे बड़ी इनिंग्स खेल दी है, 93 की। अब इस्तकबाल क्या खुरम शहजाद का दूसरे स्पेल की पहली गेंद हाफ ट्रैकर थी और जिसका भरपूर फायदा उठाया। यहाँ पे तो सजा ही मिलेगी आपको अगर आप शर्जील जैसे सेट बैटर के सामने ये लेंथ रखेंगे। बहुत तेजी से बॉल बाउंड्री की जानिब गया, टॉप ऑफ द बाउंस। कभी भी इनको मुश्किल नहीं होती शॉर्ट बॉल खेलने में। यहाँ फ्रंट फुट से ही ये पुल शॉट खेल देते हैं, कभी कभार सिर्फ अपना जो वेट है वो पीछे लेकर जाते हैं। अपर कट किया लेकिन एक से ज्यादा नहीं मिल पाएगा। बलूचिस्तान का मोराल बहुत जल्दी गिर गया था जब चांसेस दिए। शर्जील को इन्होंने ड्रॉप कैच किए, जानते थे कि बहुत महंगा साबित होगा, हुआ भी। उसके बाद ग्राउंड फील्डिंग भी कोई खास अच्छी नहीं रही, बॉलिंग भी सही एरियाज में नहीं करते रहे। कट शॉट, ये खासा 12 ओवर इलाका रहा है। काशी भट्टी बहुत मसरूफ रहे हैं इस एरिया में। यहाँ बलूचिस्तान की टीम जो है जब पाकिस्तान कप जीती थी तो उसकी एक बड़ी वजह इनकी फील्डिंग थी। इन्होंने सेमीफाइनल फाइनल में बहुत ही हैरान कुन और बड़ी दिल मोह लेने वाली फील्डिंग की थी, लेकिन इस वक्त सर गिर रहे हैं। आज विकेट कीपर जिसने फ्रंट से लीड करना होता है बाकी फील्डर्स को, वो कैच गिरा बैठे शुरू में ही। शर्जील खान उसके बाद बहुत ज्यादा मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। शान मसूद कोई मौका नहीं मिल सका। शर्जील खान उनका ये 13वां चौका, 3 छक्के भी लगा चुके हैं। ये सिग्नेचर शॉट है इनका, उछल के खेलते हैं, अगला पांव हवा में रहता है, ऑफ द हिप्स, कलाइयों का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। शानदार टाइमिंग, कोई मौका नहीं था फील्डर के पास। ये लेंथ बहुत महंगी साबित होती है, सिर्फ 2 रन की दूरी पे हैं अपनी सेंचुरी से। और शान मसूद जो हैं ये सिर्फ 2 कदम की दूरी पर थे जहां इस गेंद ने टिपा खाया, लेकिन इतना अच्छा यहाँ एंगल क्रिएट किया था और इतना अच्छा पेस को इस्तेमाल में लाए थे शर्जील खान की। मोहलत मिली नहीं शान मसूद को। क्या इसी ओवर में ये अपने जो ट्रिपल फिगर इनिंग्स है उस तक पहुंच जाएंगे? आज से पहले तक निस्फ सेंचुरी भी नहीं थी इस टूर्नामेंट में शर्जील खान की, लेकिन आज उन्होंने फॉर्म में आमद का ऐलान कर दिया है, खतरे की घंटी बजा दी है। बाकी टीम्स के लिए भी, लेकिन अभी ज्यादा जल्दी नहीं है। दूसरा रन यहां पर लेना चाहते हैं, बॉलर खुद चले गए। एक 149 पर 1। $149 for 1.
Sindh at the moment, they're just 10 runs away of 24 deliveries to win this very important game. We've been talking about that points table, it's so tight up there, which team is going to qualify for the semis, and they've done with a good net run rate too, chasing down this score inside 17 overs or 18 maybe, because 10 runs, Shajil Khan on strike, 99 runs. That has been an exceptional inning, an inning which was much needed for himself and Sindh. That is century number 5 for Shajil Khan. That is the inning of highest order. Very well played, Shajil Khan. You've made all the Sindh proud, and he deserved all the applause. What a fantastic inning this has been from Shajil Khan. Standing ovation from his teammates, and the crowds also giving him a good round. This has been a magnificent display of power hitting, some touch play along the way as well. Shajil showing his full repertoire of strokes in his magnificent ton. Just 60 deliveries. This is what Shajil will do to you. If you give him a couple of opportunities, he will make you suffer. And Balochistan is feeling exactly that at the moment. This is not easy conditions. It's hot, it's humid, and he's done a fantastic job. That will do. Singles will help. Just required 8 more runs of 22 deliveries. And have a look at this inning. This was the big moment when he scored his 5th century of his career. He's right there in the best of the best in Pakistan cricket. So only Babar Azam has scored more centuries than him at this level. Ahmed Shahzad 5. Kamran Akmal has also scored 5 centuries at this level. But this is an exceptional inning from Shajil Khan. This is what happens, Shah Faisal, as you just mentioned earlier on, that if you give a player like Shajil Khan a couple of chances, he's going to do this to you. They're just chased down 159 inside 17 overs. They're almost there now. He's an ordinary player. He won't punish you for 20 or 30 runs. If you allow him, he'll punish you with 100. And that too in double quick time. That really have killed the contest. Those early chances to Shajil, and after that he put the foot on the accelerator. The bounce and pace was really to his liking, and I'm sure they will remember this knock for a long time because it was worth watching. Now, they've been thoroughly entertained by this inning. Although he was giving a couple of opportunities, but he can't help it. It's not his fault, and he's made the most of those opportunities. Look at those. Only Babar Azam in 216 innings has scored 6 centuries. Ahmed Shahzad also in the list. Kamran Akmal, some fantastic players in that list. 36 innings. 136 innings for 500s for Shajil. His conversion rate is excellent. Little bit of aggression from Junaid. Late in the day, he must be frustrated because he was one of those bowlers who suffered at the hands of his own fielders. Haris Sohail put Shajil down of his bowling. Shajil really enjoyed his knock. Like I was saying, the pace and bounce on this pitch really was to his liking. He saw his cut shots and pull shots. Said for the first time in the tournament we saw his signature pull shot, the pickup shot from slightly back of a length, with that right knee up in the air and hitting it to square leg or mid wicket in that area, and then the cut shots as well. You could just tell when he came into the bat, and the pitch will suit his style of batting, because the ball is coming nicely onto the bat and he likes that. Just like that. Pulled. There is a fielder, but he won't help. He can't help. He can't do anything because that has sailed over that boundary line to finish off the game. And Sindh has won this game in style.
courtesy to this wonderful inning from Shajil Khan. He just demoralized these bowlers by this brutal hitting by this man, and we know what he can do, and he has done it. This camp is a happy camp now. Crowds have had their entertainment, and when Sharjeel plays like that, you have your money's worth. Turning up to a game of cricket, and he finished it off in style. That's 6 over mid-wicket of a short pitch delivery. Really sums up the day for Sharjeel Khan, who will take the headlines. And Sindh's team, their good run of form continues. They ended up the Pindi leg with a victory. There you go. That bounce was still getting big on him, but Sharjeel, he packs a punch. There's no doubt about that. Full of power, strong forearms and wrists. And Ahmad Butt was just a spectator. He's made all the Sindh proud. In fact, all the Pakistan proud, because it's always good to see somebody like Sharjeel Khan play a big knock, because whenever he is in, he will entertain all of us. And he has done it. And Sindh has won this game by 9 wickets. That is a huge victory as far as this national T20 is concerned. And this will definitely open up that points table too. It will be very interesting to see now where the teams stand. Disappointment definitely for Balochistan, but they do not have anyone to blame but themselves. He gave them a couple of opportunities, easy ones, which were spilled out, and he made the most use of that and have done this fantastically well. It'll be an interesting look at the points table when we do get there. Definitely this moment belongs to Sindh. Congratulations to them on yet another victory. Well, you also have to admire their bowling effort on this pitch. They did restrict Balochistan, although they conceded 58 in last 5, but the first 15 overs, Sindh were really dominant with the ball. Sharjeel Khan dominant with the bat. Saim Ayub chipped in. Today he was a spectator at the non-striker end, probably the best seat in the house to watch some fantastic T20 batting from Sharjeel. And when he departed, Saud made sure there was no drama. 17 overs, all it took for Sindh to overhaul Balochistan's target rather. A big boost to their net run rate as well. It has been hard work for the bowlers. They did create some chances, but they were not taken. Have a look at that economy for Khurram Shahzad, their ace bowler. 13, 11th economy for Ahmad Butt. And Yasir Shah also on the expensive side. It has been definitely tough work for these bowlers. And we know that when Sharjeel Khan is going, it's not easy place to be. Just 1 wicket for Kashif Bhatti. And as you said, 17 overs it took to score those 160 runs. You look at the match summary. Sindh winning the toss, opting to bowl first, and they bowled beautifully. Brar, the pick of the bowlers, although it just took 1 wicket, but it gave away nothing. Bangalzai scoring 17 runs, and in Pry, 160 in just 17 overs. And guess what? Sharjeel Khan, 107 of just 62 deliveries. 9 wickets is a comprehensive margin. When Sindh started, it didn't look like it would be that comfortable. But this man in your screen started off in belligerent fashion. Enjoyed the pace. Look at that. When width was offered, he creamed it through the offside. Little bit of luck along the way. But this, we've seen this many years now from Sharjeel. And Hasibullah will rue the fact. And here, Harith Sohail. This happened very quickly. Back-to-back drop chances for Sharjeel. Saim Ayub, he's been in good touch. He showed glimpses of that. But today, definitely, it was Sharjeel's day and night. Look at that. Not power all the time. Just beautiful touch. This, I would still think, was the shot of the day from Saim. Brute force from Sharjeel. Absolutely. Once he gets going, it's very difficult for the bowlers, and he showed us that why he is known as one of the biggest
hitters around the world. Look at that, off the back foot, that power behind that shot is just amazing. Another opportunity that we all thought that should have been taken. Saim Ayub was there till the end, not quite till the end, but he was there with him. And that one-hand pickup shot, that power this man possessive is just brilliant. And once you give him 3 chances, he's not gonna leave you. And that was how Saim Ayub lost his wicket. A rare catch, we would say, by Balochistan today. South Shakil in the end played few touch shots. This one was beautifully played through that point area. He fancies this area, couple of boundaries. And the fielding this has been disappointing. Shajil Khan towards onside, we all know that what he's capable of. That pickup shot on his hips is just amazing to see. We've thoroughly been entertained by this wonderful inning, by this wonderful player. Celebrated his 100, his teammates right behind him, and that was the winning moment. That sealed the victory for Sindh. Comprehensive thrashing of Balochistan. The margin 9 wickets. And this will be interesting reading now. The points table. Look at how close all the teams are. Sindh and Balochistan have played 1 game more, but there's nothing in it. Nothing. 10 points for KP, still at the top. Yeah, that will make tomorrow's game, ATF Southern Punjab and Central Punjab, the afternoon game, the first one of the day. Very interesting one. If Central is able to win that one, that will be a different story then. But at the moment, it's everyone's game. We're going to take a short break here. When we come back, we'll have presentation ready for you.
Hello and welcome to the post-match presentation of match 22 between Sindh and Balochistan, and what a game we've had. It's a one-sided affair, courtesy Sharjil's knock, first 100 in the tournament and winning this match by 9 wickets. Before I call upon the player of the match, let me again welcome Mr. Mohammad Noman Ashraf, Sales Executive from Kingdom Valley. Thank you so much for joining us. And he'll be presenting the Kingdom Valley Player of the Match award, which is a trophy and 25,000 rupees to Sharjil Khan for his brilliant 107 of just 62. It had 13 boundaries and 4 beaut sixes. Sharjil Khan is the player of the match for this game. He'll also give the trophy. A brilliant knock from Sharjil. We'll have a few words with him. इतने टाइम से हम शर्जील को ढूंढ रहे थे कहाँ रखा हुआ था आपने? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये पार्ट ऑफ गेम है और ये फेज़ एक होता है जो सबके ऊपर आता है। तो इसमें से बस जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि इसमें से आपने निकलना कैसे है। तो कोशिश यही कर रहा था कि कैसे निकलूँ। तो जैसा मेरा गेम ऑफ नेचर है, अटैकिंग क्रिकेट में खेलता हूँ, तो बस आज ही सोचा था कि आउट तो मैं वैसे भी होता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि आज ऐसी इनिंग खेलूँ कि अपना मुझे आज कोई खौफ नहीं था, भले मैं आउट हो जाऊँ तो हो जाऊँ, लेकिन उसमें मुझे हेल्प मिली अल्लाह ताला की तरफ से, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रहा। एप्लीकेशन वाइज ऐसा कुछ डिफरेंट किया आपने आज जिससे आपको लगता है कि ज़्यादा फ़ायदा हुआ बैटिंग में? देखें, बिल्कुल मैं जो थोड़ा सा अभी अपने ऊपर वर्क कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं स्ट्राइक रोटेशन के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, और दूसरा मैं फील्डिंग में ज़रा एफर्ट कर रहा हूँ, और बॉल के ऊपर मैं एंटीसिपेशन कर रहा हूँ, स्ट्राइक रोटेट में कर रहा हूँ, और मेरी कोशिश ये है कि मैं बैटिंग में अब ज़्यादा डॉट बॉल्स जो है मैं कम खेलूँ, तो बस आज मैंने उसको अप्लाई किया। बिल्कुल। कितना फ़र्क रहा यहाँ की पिचेस और पिंडी की पिचेस में? ज़्यादा सूटेबल लग रही है आपको या कह सकते हैं जस्ट योर डे? देखें, पिच मैं समझता हूँ कि दोनों को सपोर्ट कर रही है। जो बॉलर अच्छी बॉल कर रहा है उसका बॉल स्किड भी हो रहा है, बॉल में थोड़ा सा राइज भी आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि सपोर्टिंग पिच है दोनों के लिए। जो इसमें अच्छा फोकस होकर एफर्ट के साथ जो खेलेगा उसको सक्सेस मिलेगी। चलिए, वेल प्लेड, एंजॉयड योर नॉक। Sharjil, the player of the match, and he's, of course, he's a player of the match because he scored 107. Now I'm going to call Yasir Shah, the captain of Balochistan, and we'll have a word with him. Yasir, मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो ऑब्वियसली उसका जवाब आपको पता ही होगा स्ट्रेट अवे कि कैच जो है या फिर फील्डिंग जो है वो कॉस्ट कर जाती है, हालांकि 160 अच्छा टोटल है इस पिच पे। ये टोटल अच्छा था, और ये था कि रात की जब लाइट्स होते तो स्कोर होता है यहाँ पे, और मतलब बल्ले पे बॉल आते हैं यहाँ पे, तो 160 स्कोर ये था कि फाइटिंग स्कोर था यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे फील्डिंग की वजह से हम थोड़ा सा मार गए। ओवरऑल फील्डिंग को ही ऑफ कोर्स वो एक रीज़न था, लेकिन किसी और एरिया को भी आप ऐसा हाईलाइट करेंगे जिसकी वजह से आप कहते हैं हम बेटर कर सकते थे यहाँ पर? ये कि हाँ, हमारी बॉलिंग थोड़ी सी एक जगह पे भी नहीं हुई है, और ये था कि कैचेस ड्रॉप हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने रन इस तरह खाए कि हमने एक जगह पे बॉल नहीं की, मतलब एक साइड पे रन नहीं खाए, हमने दोनों साइड पे रन खाए। तो ये है कि यहाँ पे हम थोड़ा सा फास्ट बॉलिंग में यहाँ पे लाइक कर रहे हैं। आज कुछ डिफरेंट अप्रोच नजर आई दोनों, असद शफीक हसीबुल्ला, बहुत कम रन्स थे आप लोगों के पावर प्ले में भी, वो थोड़ा सा शायद आपके एक्चुअल इवेंचुअल स्कोर पे अफेक्ट कर गया, 160 से ज़्यादा हो सकते थे। हाँ, हमारा टारगेट यही था, अगर हमारे 1 विकेट या 2 विकेट होते हैं और हमारे 60 रन होते हैं, 55 रन होते हैं, तो दैट्स गुड स्कोर। लेकिन हम वहाँ पे 1 विकेट गिर गई थी और हमारे 33 रन थे 6 ओवर में, तो वहाँ पे हमारे बैट्समैन तो सिलेक्ट कर रहे हैं। 3 दिन लगातार खेला, अब आपकी रेस्ट बनता है। ये क्या एनर्जी लेवल तो डाउन हो गया था, और लड़के मतलब अगर 3 मैच आप मुसलसल खेलते हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उस तरह एनर्जी नहीं होती, इसी वजह से मेरे ख्याल में तो हमारे थोड़े से फास्ट बॉलर थोड़े से डाउन लग रहे थे। चलिए, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। यासिर शाह, कैप्टन ऑफ बलोचिस्तान। सऊद शकील को अब मैं इनवाइट करूंगा। विल हैव अ वर्ड विद सऊद। ब्रिलियंट विन टुडे फॉर हिज साइड बाय 9 विकेट्स, दैट्स अ ह्यूज मार्जिन इन एनी फॉर्मेट ऑफ द गेम। सऊद, सारे बॉक्सेस टिक हो गए आज। एज अ टीम आपने चूज़ किया कि हम पहले फील्डिंग करेंगे, चेस करने का आपको था। आई थिंक किसी एरिया में शिकायत नहीं होगी आज आपको? नहीं, ऐसा नहीं है, देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। फील्डिंग ऐसा शोबा था आज जो हम थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारी थोड़ी फील्डिंग लैक हुई, अदर देन दैट हम सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। जो आपको स्टार्ट चाहिए था अपनी टीम में बैटिंग से, वो आज आपको हासिल हो गया, इसका उम्मीद आप करेंगे कि ये कंटिन्यूसली मिले तो प्रेशर आगे कम हो? ऑब्वियसली हमें शर्जील भाई पे पूरा भरोसा था, और हमें पता है जिस दिन भी वो खड़े होंगे 1 साइडेड मैच जिता देंगे, और उन्होंने आज शो किया, बहुत ज़बरदस्त शो था उनकी तरफ से।
टॉस के टाइम पे ऑब्वियसली आपकी अपनी एक स्ट्रेंथ होगी टीम की, लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है जिसमें चेज नहीं हो पा रहा, क्लोज हो रहे हैं मैचेस, लेकिन आपने फिर भी मैं कह सकता हूँ ब्रेवली इस चीज़ को चूज़ किया कि हम पहला मैच है अंडर लाइट्स भी हम चेज पे जाएंगे, क्योंकि उस पर ड्यू का भी कोई नामो निशान नहीं था। नहीं, मेरा ख्याल है हम बहुत क्लियर थे अपने प्लान के साथ कि हमें पहले फील्डिंग ही करनी है आज, और क्योंकि मैं अपनी बैटिंग को बहुत बैक कर रहा था, पिछले लास्ट 2 मैच से भी मैं फर्स्ट बॉलिंग ही कर रहा था, हम क्लोज आके मैच हार रहे थे, तो ये था कि मुझे फर्म बिलीव था कि अगर मेरे ऊपर टॉप ऑर्डर चलेगा तो हम इजीली मैच जीत जाएंगे, और अल्लाह का शुक्र है वैसा ही हुआ। चलिए, वेल प्लेड एंड एंजॉय द 2 points and some rest. Thank you very much. Sindh winning this match by 9 wickets, and the match 22 goes to them, and that also concludes the presentation. Thank you very much, Sikandar Bakht. This was a fantastic day of cricket, and now what we have tomorrow in the first game, Central Punjab taking on ADF Southern Punjab, that starts at 2:40, and then the next game Sindh will face Khyber Pakhtunkhwa live from Multan Cricket Stadium. That's all we have for you tonight. We'll see you tomorrow afternoon. Till then, it's goodbye. With Balochistan and Sindh playing the first game under lights. Yeah, that's a release shot. Really, he's gone. That's the first boundary. Short a ball, and that's put away. लाजवाब, इसे उठा मारा और गेंद स्टैंड में पहुंच गई। That brings up 50 for Bangal Zain. Been superb for Balochistan. It's 450. Shahil Khan, one bounce and over the road. That is 4 runs. Beautifully timed. वॉकिंग ऑन ड्राइव साइम अयूब का, फ्लिक कर दिया इसार, और शर्जील खान ने पहली टेस्ट सेंचुरी बना ली। एक और एफर्टलेस छक्का शर्जील खान का। Big one. Another maximum. That is century number 5 for Shahil Khan.